your eyes adjusted to the dark yet, Raider? Loot is ripe for the picking while most of Toledo is asleep. Though my suppliers say that Ark is twice as vigilant after sunset. Go to the hospital. Don't shoot! Yeah, I'm friendly too. Don't shoot. Don't shoot. Bro, don't shoot. Friendly. Bro. Dead. Yeah. It's good. How much do I need to upgrade my stat? Let's see if I can upgrade my stat. I just upgraded it. 200,000. Bro, I got handbill splitter as well as this one. Kinetic converter something. Legendary mods. I'm just gonna take this one, upgrade it couple of times. Mechanical components. Where do we get those? I think so. I need this. Vertical, no. Yeah, this one. And actually need a mag mod or something. Mechanical components. Let's just make a couple of these. And need this ammo. Let me see how much I have. This is enough. This is I have one. And good dragon. To repair how much I needed. 3. But I don't have a blueprint. Okay, I don't have this, so Hey again. It's one thing to survive. It's another to thrive. We've been trying to get beyond the bare minimum for a while now. Yeah, I don't. And then augment.
अपनी डीलिंग हो गई। Okay. No, then I think this much is enough for night. I shouldn't have gone to that fucking hospital. All these people would say, I got everything. Nice. मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मुझे इंग्लिश में भी चल रहा है। Someone just died. Search me. Pretty far. Hey, Genwen here. Listen up. Raider camps come in all shapes and sizes. If you spot a shack made of mostly corrugated sheets, that's probably one of ours. You know what? Fuck it. I'm just gonna go here Reported that location. and call it a day. Leprechaun. I need this now. What is this container? Is it in this line? Correct. Bro, I just want bro. Bye, this rat. I'm doing free here. I can't deal with this shit. Fucking bad. Who camps, bro? I hate. Since I got something. Force back online, discharge for bomb. 2-3
let's go. Go to that location. Please something nice. Please something nice. Just to get this thing. Let's move to that location. Someone know this spot. Nothing, but Let's go to that location. that or
Nice. I think we should extract now. This is just Head home at the northern station. Go to that metro. see anyone that decent run. Nothing good, nothing bad. Just got a lot of money and I need this to nice. Send this. Then The water filters need replacing. No one knows when the parts will get here.
मैंने 2 नाइट रेड किए, दोनों बार मारा हूँ। वो भी बंदे कैंप कर रहे हैं। वैसे एक्चुअली वो स्ट्रेटजी अच्छी है, कैंप करके बंदे को मारना है। फीचर मिले और उस साइड अच्छी लूट की जगह, नाइट टाइम पे अच्छी लूट मिलती है उधर। अरे कोई तो मरा और मेरे राइट में मरा है। Let's move to that location. फिर से कह रहा हूँ PvP में जैसा काम to expect. Yes, sir. Bro, are you friendly? Are you friendly? Are you friendly? Hey, Raider. Okay, okay, okay. I just killed the surveyor. I'm just looting it. Get down. Get down. I can't put that in my app. Need that. Let it-
card entrance. Quite far. Let's go to that metro. Okay. Head home at the southern station. Cover is clear. This will be better. Dude, why are you pushing up? Head home at the northern station.
let me leave. Just let me leave, bro. Fucking asshole. Fuck. Hello. Yeah. Confirm your interest in visit past reading to visit Lincoln University Gujarat Please read the response. जाना है क्या गुजरात पे? बट जाके करना क्या है? कब है वैसे? 21 नवंबर। अरे इतने जल्दी? और कॉलेज पैसा देगा क्या? मैं भर रहा हूँ, देखते हैं। नहीं, कौन सी मैम चाहिए? आप दिशा ढोकले? कौन सा? अरे BCMC शायद अपने के लिए नहीं है फिर। Please message to cyber security students third year BTech। और फॉर्म पे क्या लिखा है? एक सेकंड, किसने भेजा? रिप्लाई उसको पूछूं क्या? हाँ पूछ ले एक बार और सुनना मैसेज कर दे। मैसेज में पूछ ले, मतलब सॉरी BCA सेलेक्ट करके भर दे। BCA सेलेक्ट करके थर्ड ईयर नीचे ना बोले कि एडिट द रिस्पांस एंड राइट योर क्लास डिटेल्स। मैम इन मैं क्या लिखूं? मैम इन द फॉर्म देयर इज नो बीटेक सेक्शन। In ma'am in the form there is no BE.tech section for the cyber security third year student. Can you clarify, or should we just select BCA third year? क्लैरिफाई का स्पेलिंग क्या है? CLA RI क्लैरिफाई और should we select BCA third year? सेंड कर दिया मैंने मैम को। क्या करूँ अब? कुछ कर भी नहीं सकते शायद अभी। Go to that location. अभी रात को फिर से मैं देखता हूँ अगर रिस्पॉन्स वगैरह कुछ आया तो, नहीं तो या फिर डाल दूँ BCA करके। तू डाल रहा है तो मैं भी डालता हूँ, अगर तू नहीं डाल रहा तो जाने दे। क्या
क्या सेक्शन क्या है? सेक्शन डी हाँ डी 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 सुना मैंने बता रहा हूँ नहीं दिख रहा क्या सेक्शन डी वगैरह मतलब ऐसा ऑप्शन है क्या लिखने का मैम तो कुछ रिप्लाई तो नहीं आया अभी तक क्या करे डालना है क्या बोल हेलो बिजी दिखा रहा है बिजी दिखा रहा है कुछ कर नहीं सकते थे शायद बंदी के साथ बात कर रहा होगा तो क्या बोला हेलो हेलो आर यू फ्रेंडली अरे तुझे नहीं बोला मैं गेम खेल रहा हूँ बट आई गेस अपने को अगर आज ही लेट लाइन दिए हमने पीछे करके डाल दिया क्या ठीक है मैं डाल रहा हूँ डाल रहा हूँ मैं चल बैक क्या मैं दूसरा काम नहीं कर सकता रुक ना मुझे काम करने दे वही तो कर कुछ किया तूने इसका मेरा भी बन गया तुमने किस पे बनाया मैंने फाइनेंस पे बनाया तूने किस पे बनाया कितने इसका है क्या बोलते हैं लाइन्स का वगैरह कुछ रहता है क्या चल मैं कॉल कर रहा हूँ ठीक है बाय
Are you friendly? Head home at the southern station. Yo, Raider, do you wanna team up? Hey, wanna team up?
Bro, you killed him while Countdown reader, camping. here. That's why I shoot. Yeah, kill him. Nothing can shoot me. I won't shoot you. I was trying to leave, bro. I just died 3 times. Okay, let you leave. Let you leave. I'm just tweaking. Yo, people person died inside. You can loot that too, one. Person. Yo, Hey, don't shoot! Yo, don't shoot. do your defense. I'm gonna die. No, I don't have. Don't move. You die. Don't move. I don't have that. I don't have mark me, so I will die anyway. Don't move. Okay, come. Also. Thank you. Nice, okay. Good one shot था भड़वा. मुझे तब स्विच करना था ये फर्स्ट वेपन पे. मैं स्विच ही नहीं किया. मैं रिलोड कर रहा. क्या इसको ले लेता थोड़ी और, बट मैं तीसरे को नहीं मार रहा था. The air scrubbers aren't doing great, so if you've got a mask, use it. How much do I need? This is the best augment, by the way. Buried city tower, dance tower. Maintenance report to Tunnel 3. Immediately, Tunnel 3. That's 750. What will I get? This is nice. I think I should buy this. It's cheap and I like that this kind. I like this. Or I can save up and buy this. This looks So, processing delays are expected. Bring patience or a book. would have taken it out. This one. This is sick. Nah. Many people use that one. No, astronaut rate. Nah. Riot.
I will get boosted too. Oh, nah, this one is the best one. Whoa, torpedoes. I look like a fucking compact latency. Price. I will buy this one or this one and save up more on The medical clinic is running on fumes. Try not to get hurt. peaceful. Right, let's do this and this time I'll bring some. Have you been up there again? Appreciate it. Between blight and malfunctioning growth. This one. Kitchen ventilation finally repaired, so smells should now align with basic descriptions. Which time did I spend on this? Should I kill him? Yo bro, do you need help? Do you need help? Do you need help?
are you good? Do you need help? How did it feel now? Let's head home at the Eastern Station. Yo, wait for me, wait for me.
He was looking for me. Actually, he was one shot through, but I got pretty good. An angle. It was pretty good shit in that church. From next number start. They know. Things. God. Good design. Nice. Yes. Please do not burrow into art cards lying outside chamber. Let's do buried city one. I'll just farm it. Feel like a diamond. Visitors, raiders, up the list. Pods are open. Launching now. Let's move to that location. Guess who? Yes, your bestie. Me. Remember to grab as many goodies as you can from those medical facilities. Just resist the urge to sit on a horde of syringes, okay? I'm pretty early, which is bad. Are you good? Are you good? My bad, my bad. I just reacted instinctively. Are you good? My bad, my bad. Wanna team up?
Want to team up? Nice one. There is person. He's extracting. Should we kill him? He's extracting. Search kill. Someone looted me. Let's kill it. Let's kill it.
I'll take annual. I need. Yo, I level up. I guess I need only 10. Yeah. No, I need 16. What? Yeah. 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Okay, shit. Lost my count. 16, no? 16. 17, 16. Fuck. रुको. 16 चाहिए. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yeah? Yeah, lost something. Nah, neither. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, I will put this much here. Yeah, and then I will do both of these. For that I need I guess 15, no? 4 more. 1, 2, 3, 4. Yeah, then we go. Need more road. We know. The pipes are running. They do that.
This is the last another industry. If you've been hoarding supplies, now's the time to share. Or don't. Whatever. School dischargers. Parachute 4, 2, 3, no time to break. You're up. Let's go to that location. Go to that metro. Yo, are you friendly? Are you friendly? Go to that location.
Fucking rat. Fucking rat.
An arc orbiter is en route. The safe window is closing. 10 minutes to get out of there. I repeat, 10 minutes. Let's go to the church entrance. I think it's good for animals. I kill this fucker. I just tried animal code, that's why I'm not playing. Let's hope it will go great. It's good to farm the buried.
fake, I think. Yep. Yo, I can. Air filters spawn in block 7. Yeah, this Breathe is shallow if you're over there. I just need blue extended mat. Then I'm good. Then I'm happy. I'm good. How will be this level? And I think we just do the torrent now. Yes. I think it's reduce 60% per shot dispersion, max shot dispersion, brightness and durability bundle. This is good for this. I just need to keep max inside. But the smart here is almost ready. Like this. Do this. Where do I get smoke? Yeah, I need the moving. Okay. Sector 4 is low. So हमेशा use. You doing all right, Raider? I appreciate you. Not too many reliable raiders left. You're really pulling your weight. Don't go causing any trouble. Art. I need one. I need to farm these. Take moving. अभी लोग आ रहे हैं इसमें।
अच्छा ये करते हैं एक राउंड। क्या मेरा बाय गया पूरा। ये मेस क्या है? अच्छा कौन? डीसी पे। काउंटर स्ट्राइक 2 नाइस। हम्म। कुछ तेरा हो गया अच्छा ये स्ट्रीम? भैया नहीं, मेरा चल रहा है अभी। मैं अभी दोस्तों के साथ खेलूंगा। अच्छा। अरे मेरे पास बाई नहीं है, बाई नहीं है मेरे पे। बीच अरे मेरे पे बाई नहीं है। आधा राउंड तेरे पास आया। एक सेकंड मुझे ये मैं स्पॉट करता हूँ। करना। ओके, वे चल बाय। बाय बाय। ओए हेलो, इसका वेट करना है क्या डैम का? डैडगम तो सोलो रन पे बैठा हुआ है। I'm thinking हम दोनों जाए क्या? वो भी कर सकते हैं, इसके लिए वेट भी कर सकते हैं। बे रुक 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 रुक, एक सेकंड रुक। एक्सट्रैक्ट कर रहा है आवाज क्या आ तू? रहा है मेरा? आ रहा है, आ रहा है। आ रहा नहीं है। नहीं, फ्री लोड आउट पे कर रहा हूँ मैं। आज आज क्या गंदा जा रहा है मेरा। 2 खेला, गंदा जा रहा है। डैम बैटल ग्राउंड्स का नाइट रेड चालू है। रुक जा, मुझे लोकेशन पता है। आई एम ट्राइंग टू गो देयर। अबे सोलो रन अच्छे है बे। सोलो रन पे अच्छा मिलता है। मुझे एक कंपनसेटर का ये मिला, क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट मिला। गाइस मेरे को थोड़े ये बैस्टियन रॉकेटेर ये सब मारना पड़ेगा भाई। मुझे थोड़ा भी sensitive मारना है। पड़ेगा। करे क्या, मेरे पास अभी हल क्रैकर है। नहीं मेरे पे तो नहीं हल क्रैकर, बट रुक रुक जा रुक जा। तो ये नीचे ही बंदा है। एक और चाहिए, मतलब ऐसे फार्म करने के लिए। वो चाहिए, ये एक चाहिए मेरे को बहुत सारा। आ गया सेंटिनल फायरिंग कोड। मुझे भी चाहिए वो किधर मिलता है? मुझे मिल ही नहीं रहा। सेंटिनल फायरिंग का 2 है मेरे पास। एक सेंटिनल का एक वो एनिमी और टाइप होता है। कोडेक्स कहाँ पे गेम का? रेडर कोडेक्स, एक सेकंड। कोडेक्स फ्री लोड आउट पे बंदे मार रहा होगा। नाइस। लिटरली फ्री लोड आउट पे बंदा मारा मैं अभी। एनविल 3 देख के। हाँ अरे भाई भाई भाई, नाइस। एनविल सबसे बेस्ट है वे। आर्क I agree. में सेंटिनल नहीं दिख रहा मुझे। बॉम्बेडियर है, स्पॉटर है। ओके हाँ, मेरे को दिखा सेंटिनल लास्ट में। अबे ये किधर मिलता है फिर? फाउंड इन हाई प्लेसेस, इक्विप्ड विद लेजर स्कैनर एंड हाई शार्प शूटिंग गन कैपेबिलिटी। कहाँ पे दिखा तुझे वो सब? मुझे तो बस उसका डिस्क्रिप्शन दिख रहा वो उस पे क्लिक करना, है। सेंटिनल पे हाँ सेंटिनल पे क्लिक कर। फिर और द सेंटिनल्स लाइट प्लेटिंग लीव्स इट रिलेटिवली एक्सपोज्ड, वो सब दिख रहा है। हाँ वो लोकेशन कहाँ उतना ही दिख रहा है मुझे। इट इज लोकेटेड इन हाई प्लेसेस, ऐसे इट इज फाउंड इन पर्च हाई प्लेस। ऊपर का बढ़ना। कहाँ पे? तूने जो अभी पढ़ा ना, लाइटली सेंटिनल फायरिंग कोर मुझे भी चाहिए। कहाँ मिलता है वो? देख मुझे दिख रहा है सिक्योरिटी लिखा है सबसे ऊपर, फिर लिखा है सेंटिनल, फिर लिखा है सेंटिनल लाइट प्लेटिंग लीव्स इट रिलेटिवली एक्सपोज्ड बट कैन बी पैराग्राफ लिखा है, बस दैट्स इट। ओके, मेरे पे 2 पैराग्राफ लिखे हैं। अबे मेरी स्ट्रीम देखना। अच्छा यूट्यूब एक व्यूअर आ जाएगा भाई। नाम है LEVBYTES। BYTES। LEVY LEVBYTES। फिर LEV फिर BYTES। लेफ्ट बाइट्स। ये है क्या? गले का पिक्चर लगा के रख दिया है, पता नहीं लव बाइट या क्या है वो। गले का पिक्चर। अभी लाइव चालू है, देख खोल के देखता हूँ। सेंटिनल्स लाइट प्लेटिंग लीव्स इट रिलेटिवली एक्सपोज्ड बट इट कैन बी चैलेंज। स्ट्रीम फ्रीज हुआ है क्या? एपिक आइटम भी मिला है। रुको हाँ गाइस थोड़ा, मैं सोलो रन पे हूँ। वही वेट कर रहे हैं।
पूरा वेट कर लो, हो जाएगा बस। देखा क्या? देखा नहीं, नहीं चल रहा है। बोलना। और तोला लेवल अप चाहिए, तो फिर मैं ये सिक्योरिटी ब्रीच खोल पाऊंगा। वो एक बार खुल गया ना, अपना चिल है बस। सिक्योरिटी ब्रीच ही काम करना है और कुछ नहीं। सबको टोरेंट है, सबको मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं रुका इस बिल्डिंग में खोजने का ट्राई कर रहा हूँ, बट आई एम अनएबल टू स्पॉट इट फॉर व्हाटसोएवर रीजन। ओह, बंदे मेरे बगल में। अबे मुझे लेजेंडरी मॉड मिला, पता है? एनविल का, एनविल स्प्लिटर। नाइस, टेक मॉड है वो यूज ही नहीं कर रहा मैं। मर गया मैं। मर गया? अरे यार। आ रहा हूँ। वो ना फ्री लोड आउट पे गया था मैं वो लोकेशन स्काउट आउट करने का ट्राई कर रहा था। एक अच्छा जगह है वहाँ पे, अच्छी गन्स मिलते हैं, बट आई कैन फाइंड इट। डैम बैटल ग्राउंड्स में जाके की कौन सी में डैम कंट्रोल टावर की है मेरे पे भी है, और एपिक वाला राइट? हाँ, एपिक चल वाला। तो चलते चल। मैं ले रहा हूँ वो, और एक डीफिब ले रहा हूँ। तू डैम स्टाफ रूम की ले ले। अगर मेरे पास सर्वेलेंस की भी है। एक सेकंड रुको। स्टाफ रूम है क्या तेरे पे? एक सेकंड ना। रूट इज ट्रैवल फास्टर। मेरा केस क्या है मैं बोल रहा हूँ। डैम का सर्वेलेंस की है। हाँ, सर्वेलेंस एक कंट्रोल टावर की है और एक सर्वेलेंस की है डैम का। सर्वेलेंस की किधर जाता है? ये है तुम्हारा वाटर ट्रीटमेंट कंट्रोल बिल्डिंग पे। ओके, मेरे पे कंट्रोल टावर का है, और कौन सा? डैम सर्वेलेंस की, स्टाफ रूम की किधर रहता है ये? रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग। अच्छा, अरे ये कंट्रोल टावर और रिसर्च सेम ही है। अच्छा, मतलब सेम क्या ले? मैं वेनेटर लेके जाऊँ क्या? वेनेटर कौन सी? बोलो। पिस्टल। ओके पीवीपी वाली। अच्छा, हम लोग अच्छे नाइट्रेट पे जा रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, नाइट्रेट। यस, नाइट्रेट। ठीक है, हम अच्छा उठा ले। मीडियम शील्ड लेके जा रहे हो तुम लोग सब? नहीं, लाइट। मीडियम लेने के लिए कुछ नहीं, बट मेरे पे ये नहीं है, क्या बोलते हैं, स्टिचर क्राफ्ट कर लेता हूँ मैं। अपग्रेड में स्टिचर। मैं स्टिचर मैक्स कर दिया। स्टिचर सबसे बेस्ट है। मैं इसको मुझे भी बहुत बढ़िया लगता है। केटल में बोल रहा था, बट स्टिचर सबसे अच्छा है। स्टिचर बेस्ट है भाई। स्टिचर 3 लेके चलता हूँ। मुझ पे ऐसे कैंप किया था एक जगह पे, उस पे मेरे पे कुछ भी नहीं था, इक्विप भी नहीं था। मैं एक डैश मारा और भर दिया उस पे। 1 HP पे बचा था मैं, उसको मारे भाई। उससे ही ये कंपनसेटर वगैरह मिला है मुझे। अच्छा, भाई बहुत सही लकी था। एमो क्राफ्ट कर लेता हूँ, रुक जा। तुम लोग का स्टैश का ये कितना हुआ लोड? स्टैश मेरा कितना है? 232 है। मेरा 154 आउट ऑफ 184। बड़ा यार वो। मैं डैम सर्वेलेंस की लेके जाता हूँ। शील्ड रिचार्जर्स। और ज्यादा लूट नहीं करना, ठीक है? मतलब बंदे आते हैं, बस आते रहते हैं इसमें। आई नो। मेरे पे टोरेंट है बहुत सारी। हाँ क्या? हाँ। कितने हैं टोरेंट? 3 है टोरेंट है। अरे बाप रे, मेरे पे वेनेटर 4 है, 1 लेके जा रहा हूँ अभी। ओके, तो फिर चलेगा। मैं एनविल और ये लेके आ रहा हूँ स्टिचर सब।
इसको अपग्रेड करने दो चलो। अरे स्मोक्स ले लो तुम लोग, स्मोक्स। हाँ स्मोक्स। मैं 3 लिल स्मोक नीड रखा हूँ। मैं नहीं बड़े रखा, दो ठीक है, रख रहा क्योंकि हूँ। मैं थोड़ा हीलिंग और नेड्स लेके जा रहा हूँ मैं बड़े दो रख रहा हूँ। ठीक है। और एक ब्लेज ग्रेनेड ट्रैप ले रहा हूँ। अच्छा हाँ, एड्रेनलिन शॉट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 4 लेके चलता हूँ। और क्या चाहिए? स्मोक ले एड्रेनलिन शॉट ले लो बे। मैकेनिकल कंपाउंड। रॉकेटियर ड्राइवर चाहिए मेरे को। ये रॉकेटियर ड्राइवर तो एक्सक्लूसिव वो वाला नहीं। मैं एनिमल 3 लेके आ रहा हूँ। मैं आज ना ये सब हंट करने में निकलते हैं। ये राउंड नहीं कह रहा हूँ मैं, बट आज निकलते हैं ये सब हंट करने में। ओके आर्क पार्ट्स, पर्पल आर्क पार्ट्स। चलो मैं रेडी हूँ। I'm ready as well. लीडर अच्छा डायग्राम तो है ही नहीं, रुक जा। हाँ इन्वाइट कर। मेन आइटम तुम्हारी है। क्या मजाक। एक सेकंड। ओके मैं डीफिब ले रहा हूँ, स्मोक्स ले रहा हूँ, ब्लेज ग्रेनेड ले रहा हूँ। हो गया। डेफिप, अच्छा हाँ डेफिप मैं भी रख लेता हूँ एक्चुअली। 2 लेके जा रहा हूँ। चलो मैं रेडी हूँ। स्लो खेलना है ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। आप पहले जाएंगे मर जाएंगे, लेट जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर। मैं भी की लेके जा रहा हूँ ठीक है। नियम तो हैच की ले ले अगर है। हैच की नहीं है, फर्क पड़ता। नाइट्रेट है। सॉरी नाइट्रेट है। चालू कर। नियम रेडी का। रुक मैं पीला चेक कर, चेंज कर। ज्यादा दिखता है पता है कि नहीं। नहीं मैं बोल रहा था इन द सेंस कि चेंज कर लो कलर, पावर रेंजर्स जैसे जाएंगे। मैं ब्लू पहना हूँ। मैं रेड पहन रहा हूँ। M&M गैंग सब अलग अलग। मेरा बैकपैक भी ब्लू है, देख रहे हो कि नहीं? हाँ वे मैं तो वो बाल्टी अटका के आ रहा हूँ। ठीक है। इस गेम में बीच में मेरा ऑडियो बग हो जाता है, लाइक पता नहीं। मेरे फ्रेम्स ऐसे कभी नहीं बीच हो में रहा है। ड्रॉप होते हैं। अरे भाई बहुत लेट घुस डाला है हम लोगों को। अच्छा है एक्चुअली, क्योंकि बंदे उधर मार के मर जाएंगे, अपन बस लूट लेंगे थर्ड पार्टी। तेरा मेरा वाटर ट्रीटमेंट बिल्डिंग का एक की है, तुम्हारे पास कौन सा की है? कंट्रोल टावर पास में वाटर ट्रीटमेंट है। Let's go to water treatment control. Have your eyes adjusted to the dark yet, Raider? Loot is ripe for the picking while most of Toledo is asleep. So Look, my इधर suppliers एक say weapon that crate Mark is रहता है। twice as vigilant after sunset. नहीं है। नहीं इधर ऊपर रहता है। एक सेकंड। इधर साइड पर। नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे नहीं इधर रहता है, इधर। Up there. अरे तो नहीं चढ़ोगे क्या? चले गए। हाँ चढ़ गया। ये तो जमा ट्राई करता हूं। अरे चढ़ गया। अरे नहीं है इधर रहता है। तो हैक की जगह लग रहा है। doesn't look like a place developers intended us to. नहीं वो क्या करते हैं, कौन सी तो लेजेंडरी ये रहता है ना, वो जिप लाइन। हाँ उससे वो करते हैं। हाँ स्नैप ये करना है क्या? लाइट तो बज रहा है। तो लगा है नहीं, टाइम वेस्ट होगा। मैं खोल दे। चलो वाटर ट्रीटमेंट चलो। आवाज बहुत करेगी। ये आवाज मुझे बहुत फनी लगता है कभी। ये दूर तक सुनाई देता है, मालूम है?
नहीं मुझे ये मिला, फील्ड क्रेट मिला। Let's go to that field depot. फील्ड डिपो पे पास में कोई तो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मारना है क्या? नहीं भाई बहुत दूर है, पहुंचते वक्त अपन वो चले भी जाएंगे। चलो मैं वाटर ट्रीटमेंट की तरफ जा रहा हूँ। Let's go to water treatment control. खोल देख कुछ मिलता है कि नहीं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तब तक नहीं होना जो फील्ड को कर लेते, कुछ नहीं होगा। अरे वो कर दिया Baron husk. हुस्क बैरन हुस्क चाहिए था ना तुमको। हाँ हस्क का क्या करना है? लाइक कुछ फोटो वोटो लेना है क्या तुमको? नहीं उसको लूट करना रहता, याद है। सबको सुनाई देता है वो भी। वो तो गांव को सुनाई देता, और तू उसके पढ़ भी सकती है, तुझे ट्रीटमेंट से पढ़ा तुझे पढ़ रहे हो तो नहीं वो फायर जो फायर से मरा हूँ। बिल्कुल पहले जल्दी। इसमें से ये मिलता है, ठीक है, ब्लूप्रिंट मिलता है। आगे चला गए। भाई आग बंद हो जा भाई, फिर आग चलेगा इसका। इधर वो लीवर है मेरे राइट में। Arc synthetic, impure arc, coolant, tattered arc, lining, damaged arc, power, coolant, arc, performance T, metal parts, मैं जल्दी है। मैं हूँ। यहाँ पे लेकिन बंदे रहते हैं, ठीक है? अरे वॉक कर। ए रेडर कैश है इधर। नियॉन ढूंढना बाद में। किधर रहता है? इधर रहता है ना, इस साइड। इस रूट पर रहते हैं। वही अरे इधर से वो बहुत क्या करते हैं, वो तो बहुत क्या करते हैं। ठीक है खोल देख क्या बंदे हो सकते हैं। वो देख ये देख बोला था ना मैं। आगे मार, मैंने बहुत दिया जल्दी आ इधर है डिफे पे घुस अरे इधर उसके बाद मार इधर डाउन इधर ये बॉम्ब। ओह नो अरे यार शॉटगन की बड़बो गए भाई। शॉटगन क्यों सरेंडर एनविल मिला था मेरे को। अरे तू इस गार्ड में नहीं डाला क्या वो? ये पकड़ में नहीं डाला था तुम? नहीं। अरे यार bunch of rats, die bitches। मैं कितना दिया मुझे देखना है। डाउन होने पे लोग इन्वेंटरी भी खोलने नहीं देते बे। कर दे, सरेंडर कर दे, नहीं खोलने देते, वही बीटी लगता है हमको भी। जल्दी कर नहीं टाइम वेस्ट हो रहा है। वॉल्केनो 3 पे तभी मैं सोचा मैं कितना 98 दिया मैं वापस चलो मैंने एक बेनेटर गया मेरा एनविल गया। अच्छा वाला स्ट्रिचर पे गया। अब एक शॉटगन है, वही लेके जाऊंगा। एल्टोरो मैं भी शॉटगन लेके आ रहा हूँ। मैं वॉल्केनो लेके आऊँ क्या? नहीं एल्टोरो लेके आ। नहीं इतना गार्ड होता उतना ज्यादा वही एल्टोरो लेके जा रहा हूँ मैं। एल्टोरो और एक वो स्ट्रिचर क्राफ्ट कर लेता फिर से। मैकेनिकल कंपोनेंट्स अपग्रेड कर रहा है क्या स्ट्रिचर को? 3 मैं हमेशा स्ट्रिचर 3 पे ही लेके चलता हूँ। शॉटगन की एमो कितने लेते हैं? मैं 60 लेता हूँ। स्ट्रिचर ले रहा है तू? मैं स्ट्रिचर नहीं लेता फिर। मैं ले रहा हूँ। मैं फेरो लूँ क्या? फेरो हाँ ले सकता है। नहीं फेरो लेकिन थोड़ा वीक है PvP में।
PvP नहीं करेंगे, मतलब बीच में आ रहा है उसके लिए बस। उसके लिए तो शॉटगन भी चलता है। मैं बोल रहा हूँ कि क्या अगर वो आया तब BT होगा तुम्हारा। लाइक PvP में बहुत वीक है। तो अगर फेरो ले रहे हैं ना, तुमको स्टिचर नहीं तो कुछ ऑटोमेटिक गन लेके जाना पड़ेगा साथ में। एमो खत्म हो रहा है भाई मेरा। मैं ये कम मेटल पार्ट्स खत्म हो गए। सेम मेटल पार्ट्स शील्ड रिचार्जेस भी नहीं है मेरे पे, पता है। 2 है बस, 2 है। थर्ड शील्ड रिचार्जर लेके चलता हूँ और कोई चॉइस नहीं है। क्या शॉटगन लेके जा रहे हो क्या सब? हाँ, एक गिल्टोरो और एक स्टिचर। गिल्टोरो लेके जाता हूँ और एक स्टिचर ले रहा हूँ मैं। बर्लेटर ले लेता हूँ। एक सेकंड, मैं जॉल्ट माइन ले रहा हूँ, ठीक है? जॉल्ट माइन ले रहा हूँ। वो लोग चला के रखे थे। अपन जॉल्ट में से कुछ हुआ नहीं, पता है आपने को? नहीं वैसे हुआ नहीं कुछ, बट वो लोग अलर्ट हो गए ना। हाँ भाई बहुत मैकेनिकल कंपोनेंट्स चाहिए मेरे को। मुझे भी चाहिए। चलिए हम रेडी कर, आई एम रेडी। एक सेकंड, मुझे सब इक्विप करने दो। मैं एल टोरो 3 लेके जा रहा हूँ। बस नहीं है अपग्रेड करने को रिसोर्सेज। मेरा भी कम हो रहा है धीरे-धीरे। खराब रन गया ना 2-3 कल रात से, इसलिए चलो अच्छे से चलते हैं। अरे मैं बोल नहीं हम लोग को ना ये अगर देखें, हम लोग अगर देखते हैं ना ऑनगोइंग रेट पर डाल दिया ना, तो इट्स नॉट वर्थ गोइंग पे, मतलब हाई जो की वाले रूम्स पे। अभी जैसे उधर बंदे रहते हैं, बंदे ऑलरेडी रहते हैं वही। अगर हम लोग देखिए कि चलो ठीक है नया सेशन में चल रहा है तब ठीक है, आई सजेस्ट नॉट टू गो इन दोस प्लेसेस व्हेन जब हम लोग को लाइक ऑलरेडी ऑनगोइंग सेशन में डाल दिया हो। बट अगर वैसा रहता है भाई, आप सबसे पहले पहुंच गए तो फिर उधर जाके कोई तो अपने पे थर्ड पार्टी कर देता है, ऐसा होता है। नेसेसरीली बी प्रिपेयर्ड फॉर अ फाइट। अगर तुम चाह रहे हो वो मैटर नहीं करना मेरे को। मैं तीन डिफेब लेके जा रहा हूँ, बाढ़ में जाए। मैं इसमें डाल, सेफ पॉकेट में डाल। सेफ पॉकेट में डाल रहा हूँ। हाँ मेरा स्मोक सारा गया है, मैं बड़ा वाला लेके जाता हूँ। कोई ना चलो रेडी करो, दिमाग खराब हो गया मेरा साला। ओके एक सेकंड, स्मोक्स बना रहा हूँ मैं। बना ली स्मोक कितने बना? लाइट मैं रेडी हूँ। शॉटगन अमो स्टॉक नहीं, शॉटगन अमो को उठा लो नहीं थोड़ा सा। नहीं है मेरे पे, केमिकल्स नहीं है मेरे पे क्राफ्ट करने के लिए। आई डोंट थिंक मेरा हो पाएगा। लुक ले, कितना चाहिए? 0 है मेरे पास, 0 है तो मैं उठा लेता मैं जितना बना सकता हूँ। कुछ भी क्राफ्ट नहीं कर सकता मैं, अब लिटरली नथिंग। मैं 30 दे दूंगा, चल। लाइट एमो भी नहीं है मेरे पास। क्या चल रहा है भाई ये गेम? कुछ तो रिसाइकल करना। एमो कहाँ से मिलेगा? वो क्राफ्टिंग कंपोनेंट्स मिलता है ना। अरे मेटल तो एमो खरीद ले तुम। सीड्स क्या कहाँ लेके जाएगा इतना सीड्स तुम? हाँ वो भी तो मेरे को ये बहुत इरिटेटिंग लगता है। Nice to see you thriving. दूसरे मेनू जाते रहो लौड़े जैसा। याद करना पड़ता है किधर क्या रहता है। सीड्स इतना सीड्स है तुम्हारा। सीड्स से वो एमो नहीं बेच रही है। अबे एमो खरीद सकते हो ना तुम, क्या बोल रहे हो तुम? अच्छा नहीं, पैसे से खरीदते वो इसके पास वो यंग वन। हाँ सॉरी, हाँ टीयर 1, हाँ उससे ले लो, पैसे तो है ना। I'm just happy we're उतना लाइक 2-3-4,000 तो दे ही पाएगा तुम। You came to the right place. एक अच्छा रन चाहिए होगा हम लोगों को। मैं रेडी हूँ वैसे। ये शॉटगन एमो ना, शॉटगन एमो तो उठा के ला रहा है रे। ये उठाया है। हाँ उठाया। You're blocking the door. लूटिंग MK2 साला कॉम्बैट वाला गया। फक यार, क्यों दिमाग में नहीं आता वो सेफ पॉकेट में डालो करके चीज। एनविल भाई आज सुबह भी तो मैं तुमको बोल रहा था, आज सुबह इसको वेनेटर का ब्लूप्रिंट मिला था। अरे वेनेटर का मिला था? हाँ मिल गया।
बट ये सेफ पॉकेट में नहीं डाला था, मैं रिमाइंड किया तभी ये डाला है। वेनेटर का मिले तो इसका पूरा अकाउंट क्रैक है भाई। वेनेटर मिलता ही नहीं है। मैंने वो स्ट्रीमर्स देखे, वो में वेनेटर क्लियर होता है उनको, बस ये मिलता है, बटीना मिलता है। बटीना हाँ घटिया है वे। मेरे पास भी है बटीना, आई डोंट लाइक। अबे मेरे पे रेनिगेट का भी मिला है मुझे। मेरे पे 3 वेपन्स का ब्लूप्रिंट है, एक बटीना, एक ऑस्प्रे और एक ये एल टोरो। मुझे टोरेंटो का मिला है, बटीना का मिला है और रेनिगेट का मिला है। अच्छे मिले थे। डिफिप का भी ब्लूप्रिंट है मेरे पास, डिफिप भाई डिफिप, लेकिन उसके लिए लेवल 3 लगता है ना तो मेडिकल। नहीं लेवल 2 लगता है मैं मेडिकल। डिफिप रख ले रहा हूं तुम लोग के लिए। मैं डिफिप क्राफ्ट कर सकता हूं। मैं भी डिफिप रख लिया हूं। चलो जल्दी। हाँ नियॉन रेडी कर। मैं स्मोक्स नेड्स रख लो थोड़ा सा, मेरे पास नेड्स नहीं है। हाँ मैं रखा हूँ ब्लेज ग्रेनेड्स। शॉटगन हम तो टूल आ रहा है, ये टूल मेरे पास से लाइट है। ट्रिगर नेट का भी ब्लूप्रिंट है मेरे पे लुल। अरे भाई नाइस। वर्टिकल ग्रिप का भी है, वर्टिकल ग्रिप 2। वर्टिकल ग्रिप का मेरे पे भी है। चलो रेडी कर नियॉन। शॉटगन ला रहा है ना, नहीं तो मेरा बीटी हो जाएगा वहां पे। नहीं नहीं हाँ उस टाइम पे हैंडल पे स्विच करके मार देता ना भाई, बहुत मजा आता। अरे आई थिंक मैं की लाना भूल गया। मेरे पे कंट्रोल टावर की है ना। ठीक है। अरे यार एकदम से याद नहीं है। अरे हाँ भाई की नहीं है मेरे पे। ओ है की है। चलो नया सेशन है, नो टाइम टू वेस्ट। किधर कौन सा है? बहुत दूर है। अरे शॉटगन है ब्रो। Go to the control tower. डाल रहा हूं। Wen here. भाई नीचे जा रहा है। If you spot a shack made of mostly corrugated sheets, that's probably one of ours. इस पे चले जल्दी बोलो। कंट्रोल टावर whatever is closer. Go to water treatment control. वाटर ट्रीटमेंट चलता है चल। मेरे पे ट्रैप वाला लाया क्या? मैं ट्रैप वाला नहीं लाया। मैं लाया हूँ ही लाया हूँ। मैं तीनों लगा दूंगा, बस पहुंचना है पहले हम लोग। अपन इधर से होके जाएंगे ध्यान से। शायद थोड़ा सा औकात में राइट से चलता है। Let's go to water treatment control. इधर भी स्पॉन है। इधर भी एक लीपर है। एकदम राइट से भाग रहा हूँ। चलो हाई स्पीड बीच में स्लाइड कर दिया करो, वो होता है। अबे लेकिन इतना दूर स्पॉन दिया ना, हम लोग से पहले एक स्पॉट पहुंच गया होगा वहाँ पे। मैं तो कहता हूँ कि पावर जनरेटर से लोग वो सिस्टम के लिए वो छोड़ो है। मैं वही सोच रहा था, बहुत दूर है। पावर जनरेटर में जो कोई भी होगा उसको भेज देंगे। अभी दूर है वो भी। अभी हाँ वही यार पहुँच ही गए। चलो कमिट करते हैं। कोई ना लड़ेंगे, पड़ोगा तो लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे। शॉटगन लेगा। 2 बचे थे क्या बंदे? लड़ाई हुई। हाँ उनका एक डाउन हो गया था ना, नियॉन एक को नॉक किया था शायद। वो दिख रहा है, रेडर कैसे दिख रहा है? चलना है क्या बोल?
चलना चलना चल चल चल। रूम में कोई नहीं। हाँ पता है। आवाज नहीं करते भाई। आवाज कट करो। क्राउडवर्क कर। वही कर रहा। लेफ्ट तेरे साइड में वास्प है। सुनो और एक चीज़ बोल रहा हूँ ना, अगर नॉक होगा ना बंदा उसको मतलब अगर मौका दिख रहा है तो फिनिश कर देना, नहीं तो छोड़ देना। फिनिश करने पे मत रहना, उसका दूसरा बंदा आके पेल देगा। वो देख एग्रो है अंदर ही है उसके। अंदर है वही पे चल थोड़ा स्प्रिंट कर। बस शॉटगन ले रखो हाथ पे। इसका एंट्रेंस लेकिन राइट साइड है। यहाँ पे भी है। यहाँ पे है। आई थिंक सो नॉट। इतना मुझे पता है राइट साइड होता है इसका एंट्रेंस। हाँ राइट साइड है। आजा राइट से। लेफ्ट मत जाओ, लीपर है वैसे। लूट रहे लोग। खुल रही है लोग। कोई ना खोल ले। बिल्कुल भागना मत। मारेंगे तीनों को लेट आएंगे अभी यहाँ पे। और अगर बंदे नॉक किए ना कॉल देना, ठीक है? एक नॉक या ऐसा नहीं पीपीपी लेते रहेंगे ना। वहाँ पे देख, वहाँ पे भी किसी को एग्रो कर रहे हैं। वो दूर है। अरे इग्नोर दैट। दो है रुक टीपीपी ले रहा हूँ। हाँ मैं ले रहा हूँ। साउंड मत कर। नेट से एक दिख रहा है। नेट से ओपन करना अगर ऊपर। सुन ना, क्रॉस करके उस साइड जाना कोई। साइड में इनको मार के पहले वही लोग लिटरली यहाँ पे वही लोग हैं। एक अंदर वाले को बाहर निकले। चल अंदर चल। मत बोले। वो देख उसको नहीं पता। नहीं देखा। अरे देख लिया आपने भी नहीं देखा है। अरे भाई हिज राइट काउच कर। अबे बैक कर रहा था। देखा है क्या वो? राइट साइड चाह रहा था क्या? इससे का मैं ये देख रहा हूँ। देख लिया शायद। माइंड लगा लेता हूँ मैं। सारे से देख लिया क्या? आई गेट देख लिया। नहीं मुझे नहीं लगता है देखा है। आई डोंट थिंक सो देखा है। आ गए वो लोग, निकल गए क्या? हाँ नहीं दौड़ तो रहे अभी भी है क्या? मुझे नहीं दिख रहा इसलिए बोल रहा हूँ। दौड़ने का आवाज नहीं आ रहा। नहीं मैं दूर हूँ थोड़ा देर। नहीं निकल गए उधर। आप बात पे एंट्री पे बात प्लान करना चाहिए। यहाँ पे साइड में ही दौड़ रहे भाई। यहीं पे है। ठीक है इधर ये बात उसको मारना है क्या? नहीं यार रुक। इधर है ये लोग। इधर दौड़ने का आवाज आ रहा है। नियॉन दौड़। मैं I honestly don't see that. अरे और आगे सामने वाली बिल्डिंग में बैस्टियन है। अरे उसको कौन रहा है ग्रुप किया? कोई नहीं आवाज नहीं आ रही। मेरे ऊपर ऑर्नेट है। अंदर घुसे क्या? स्मोक कर रहा हूँ। पड़ेगा बैस्टियन आ रहा है। हाँ मेरे ऊपर हॉर्नेट आके मैं अंदर जा रहा हूँ। कम तो मैं सिर्फ चुप के बैठा हूँ। सामने ही है हम लोग के सामने। अरे अंदर स्मोक करो ना। अरे स्मोक करो यार।
गए भाई आज भाई उन लोग ने मुझे जिंदा नहीं छोड़ा। तुमको मारने लगा था हाँ हम लोग उसके सामने के दरवाजे से गए, सामने से इसको डाउन किया, फिर वो पीछे से मारने लग गया। ये बॉम्बार्डियर नहीं, बैस्टियन। तू कहाँ पे है? मैं देखना कहाँ पे हूँ मैं, तेरे जस्ट पीछे तो हूँ। एक चांस नहीं मिला भी उनके साथ लड़ने को। लेफ्ट कैसे डाउन हो गया? लेफ्ट को वो लोग मारा। अरे पीछे से बैस्टियन मेरे गार्ड में घुस रहा था, मैं अंदर गया और अंदर मार दिया। बीटी हो गया। तो ये बैस्टियन विद बीटी चीज है भाई। क्या करे बेटा गम? क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना है क्या? नेक्स्ट रन पे आता है। Let's head home at the water. मेरी गन नहीं ले सकते, 2v3 मुश्किल है। ले सकते हैं बट मुश्किल होगा। नहीं मुश्किल होगा, बैस्टियन है ना, बेटी वही है, एक तो चल जाते हैं। काम करते हैं, क्लोजेस्ट एग्जिट कौन सा है? Head home at the water treatment elevator. वो बहुत रिस्की है, उस पे चलो। Let's head home at the north complex elevator. वो लोग भी मोस्ट लाइकली वहीं पे जाएंगे, दैट्स प्रॉब्लम। ठीक है। अरे भाई यहीं से स्टार्ट नहीं किए थे क्या गेम? यस नहीं, ये क्या है बे? हम लोग वहाँ फैक्ट्री जैसे कोई राइटिंग रीडर जैसा। यहीं से स्टार्ट किए थे हम लोग। आजा नहीं कमिंग, पहुंच गए। अबे यार फिर से वो आ गया था। और स्नेच या पता नहीं क्या था। बैस्टियन किसी पे चढ़ रहा है। चल 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 रैक चेक। रॉकेटियर का ड्राइवर भी चाहिए। रॉकेटियर भी है वहाँ पे। इधर लेफ्ट साइड। रॉकेटियर पीछे है बट अपने साइड नहीं आ रहा, लैटरली जा रहा है। कॉल करके आ पाएगा? रुक जा, रॉकेटियर आ रहा है, उसको जाने दी। रॉकेटियर पिंग कर। नहीं आ रहा, जा बहुत दूर है। ये रहा Rocketeer, by that building. रॉकेटियर तेरे ऊपर है। रॉकेटियर जस्ट तेरे ऊपर है। मेरे तो वो आ रहा है, नीचे आ रहा है। बारिश को
वही पे एकदम लो होवर कर रहे हैं। मन कर रहा है नहीं तो मार दो। पावर केबल दे रहे हैं। आजा आजा चल 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 चल। हाँ रुक जा। गोइंग। कॉल करो। हाँ कॉल कॉल करो मैं कॉल 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 कॉल। लेफ्ट का लेकिन वो हो गया ना, खराब लग रहा है। मेरे को आदत हो गया है भाई। अरे वो बैश बॉम्बार्डियर जो भी था ना, वो नहीं होता तो मे भी शायद थोड़ा अच्छे से फाइट कर पाते हैं हम लोग, आई बिलीव। चल मैं क्रिकेट कर रहा हूँ। किधर जाना है? उधर ही जाना है क्या? नाइट वापस नाइट्रेट जाएगा क्या फ्री वो लेके? हाँ सब पॉइंट से बेटर तो वो डे रेट पे जाते हैं ना। हाँ डे रेट बेटर होगा क्रिकेट नाइट्रेट थोड़ा सा तो सामान मिलेगा। अपन जिधर स्पॉन होंगे उधर लूटेंगे, ठीक है? ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनता है। ठीक है तो सब लोग फ्री टिकट लेके जाएंगे क्या? तुम लोग चाहे तो नॉर्मल रेड ले सकते हो, बस महंगे सामान मत लो। वेपन्स क्या मेरे पास? सस्ते वेपन्स सब ग्रीन और ब्लू है मेरा। फेरो 3 लेके जाओ क्या? मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे पास मेटल फेरो 3 ले लेता चलो। मेटल कौन बेचता है? मेटल मेटल तो ये करना, ये एसएलएस क्या बोलते हैं, रिसाइकिल करना। नहीं है रिसाइकिल करने का सामान, कुछ तो होगा आई गेस। वो मेटल आर्क वाला है, बहुत है होगा तो उसमें से 30 मिलता है। आर्क वाले से निकाल सकते हैं मेटल? हाँ बहुत से मेटल मिलता है, मेटल बहुत कम है। ओहो पेड़ों को फोड़ कर लेता हूँ, रुक जा। चलो सही है सही है। अब जाके मैं रिफाइनरी में पहले बनाता हूँ मेटल, मतलब ये मैकेनिकल कंपोनेंट्स। आड़ के लोग लेकिन और भी कुछ काम होता है, आई एम प्रीटी श्योर। क्या था वो? शील्ड का था कुछ। हाँ बकवास गन बना के रख देता हूँ। हाँ लाइट शील्ड्स में काम आता है। वेनेटर बना सकता हूँ बट आई वोंट। तुरंत तो लेके आओ क्या? मेरे पे 4 है, नहीं 3 है। मैं फेरो लेके जा रहा हूँ, फेरो 4 और स्ट्रेचर 3। फेरो से ज्यादा रिलायबल तो रैटलर लगता है मेरे को। हाँ वो भी है। रुलेटर लेके आओ क्या? मैं कॉमन गन्स लेके आ रहा हूँ लेवल 4 पे। एनविल 3 है लेकिन थोड़ा ब्रोकन है, रिपेयर करके लेके जाओ या रहने दो? तेरा मर्जी। तू क्या लेके जा रहा है निगाह? देख रहा हूँ कितना अपग्रेड हो पा रहा है, स्टिचर और रैटलर। हाँ मैं तो फेरो 4 और स्ट्रेचर लेके जा रहा हूँ। चलो 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 चलिए हम लोग चलो। टीचर मिले भाई, टीचर नहीं तो कैटल। मेरे को वो सिंपल गन पार्ट से कमी है बे। क्राफ्ट कर सकते हैं उससे। वो होना पड़ेगा ना रिफाइनरी में। नहीं कर लाइट गन पार्ट्स, सिंपल गन पार्ट्स नहीं कर सकते। हैमस्टर विलेंस की ले लेता हूँ। मैं तो बस अब मेटल फार्म करने वाला हूँ। 2 रेड मेटल चाहिए बहुत सारा। जॉल्ट माइन किधर है मेरा? पावर रॉड ओके बना सकता हूँ। चलो मैं रेडी हूँ। शॉटगन एमो चाहिए।
लाइट एमो चाहिए, मीडियम एमो चाहिए। मीडियम एमो नहीं है। द फक। वर्कशॉप, वर्कबेंच, मीडियम एमो। मेटल पार्ट लिटरली खत्म हो गया मेरा। ट्रैफिक का वेट करो और क्या। लेट्स ट्राई टू अवॉइड अ बिट ऑफ कॉम्बैट। ठीक है ना, बस साइड से स्क्रैप्स उठाएंगे ये रन। बैसन को मारना है भाई, रॉकेटियर को भी मारना है भाई ये स्लो आउट पे तो कर नहीं सकते, उसके लिए ग्रेनेड भी नहीं चाहिए बहुत सारा क्वेश्चन। हाँ। जब हम लोग वो बैशन मारने जाएंगे ना, एकदम सस्ते गन्स लेके जाएंगे और नेट भर के लेके जाएंगे। नेट बनाने वाला तो ये चाहिए ना, एक्सप्लोजन स्टेशन में वो हेवी इम्पैक्ट फ्यूज ग्रेनेड चाहिए। अभी मेटल पार्ट्स, केमिकल ये सब दिखे ना, उठा लो सीधा, तोड़ मत देना। मुझे भी बहुत चाहिए अभी मेटल पार्ट्स, मेटल पार्ट्स। अगर फाइट ले रहे हो ना, बोल देना पहले फाइट ले रहे हैं, फाइट ले रहा हूँ, एंड देन लाइक वी कैन एंगेज अकॉर्डिंगली। नया सेशन है, नया सेशन। पावर जनरेटर कॉम्प्लेक्स। Let's go to the power generation complex. हाँ, उसे बर्लेटा मिल गया, लॉल। बर्लेटा 2 बर्लेटा, लेकिन उतना वो अच्छा नहीं है, लोग बोलते हैं। है तो मतलब, कुछ भाई बेच सकते हैं ना। हाँ, you can sell it. What? बर्लेटा अरे अपन बाहर क्यों आए? इधर से ही जा सकते थे, अंदर से ही जा सकते थे। अरे बस टीचर मिल गया मुझे भाई। शॉटगन एमो। हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? ऊपर ऊपर पावर जनरेशन ना, ऊपर चढ़ा कैसे? इधर से अपन इधर स्पॉन हुए थे। हाँ हाँ, अरे इसके दर्जन हो गए। ये लो बेटा, साइड से। तूने मारा? हाँ, जल्दी by that building. कोई दिखा क्या? नहीं, कोई नहीं होगा। आई मीन हो सकता है, ये बंदे सामने देखो, कहीं दूर है। इसमें हाँ, इसमें सामने वो एलिवेटर के लिफ्ट के पास है। अरे तोड़ रहे उसको, अब जिसको तूने मार किया उसको ही तोड़ा उन लोग। ये देखिए यहीं पे। भाग मत, स्प्रिंट मत कर। मार करो अगर दिखेगा तो। हाँ, सामने वो लोग एलिवेटर के पास है। बस उसके सामने से नहीं, मैं उसको टच भी नहीं किया भाई। अरे नहीं, वो सामने से प्रॉक्सिमिटी है उसको। आओ, वो लोग एलिवेटर के पास है। यहाँ से यही होंगे यहाँ पे, लेकिन वो इजीली स्पॉट कर सकते हो, ऊपर मत जाना। लेफ्ट से जाओ तो फ्लैंक करो। रॉकेटियर उनके माथे के ऊपर। आगे अंदर जाना। चला रहे, देख वहाँ पे फायर वर्क चल रहा है। रॉकेटियर जा रहा है, उधर गए वो। ये कैंप करे क्या? कर सकते हैं, दिक्कत क्या है भाई? ये क्या वो लोग थोड़ा आगे निकले ना। हाँ आगे निकले, इस पे है क्या ये लोग? वो इधर जा रहे शायद। Let's go to the dome.
radar camera. Down there. क्या हो गया क्या हो गया? ये ठीक इतना ही है क्या? लेफ्ट साइड हो स्क्वाड है क्या? मैं जाऊंगा मैं मैं तेरे साथ आके खेल सकता हूँ। नहीं मैं जा रहा हूँ नहीं तो खेल लेना थोड़ा टाइम से खेल रहा था मैं साइड में फायर हो रहा है सेट आउट एकदम नहीं ये आजा आजा इधर मिलता है टेक आई हर्ड पे ये तेरा स्क्रीन से वो करते हैं काम करते हैं नाइट के स्नैप बैटल ग्राउंड में और उसके सराउंडिंग में जितने भी रेसिडेंट्स हैं उसको देखते रहो। हाँ यस बाहर के साइड ना हम लोग बोलते हैं ब्लूप्रिंट्स मिलने का चांसेस ज़्यादा है हाँ इसके साइड आउटस्कर्ट में जो भी आउटस्कर्ट ये सब रेसिडेंट्स हैं पूरा रेडियली बाहर की तरफ ये राउंड देखो लाइक वेरी हाई चांस तो इतना प्रॉमिस किया कि तुम 5 बार करो तुमको तो ये भी मिल जाएगा चाहिए वो वुल्फ ग्रेनेड है उसका बुलेट मिलता है। अरे ये खोलने के लिए पावर बैंक तुझे क्या पावर रॉड चाहिए वुल्फ पैक का तो ब्लूप्रिंट में लेके तुझे मैंने मिला नहीं है भाई मैं आज ही जस्ट लिटरली अभी सीखा मैं 2 ब्लूप्रिंट मिले हैं भाई वो भी दोनों भाई और तो है नहीं नहीं है फ्राइड मदरबोर्ड चाहिए था मुझे वो मिला है ऐसे बाहर जाने का रास्ता है बंद कर दे इंडियन ब्रोकन ब्रिज पे जाएगा कुछ है वहाँ पे बहुत ओपन में अरे फील्ड क्रेट ओवर देयर बिल्कुल नीचे भी पड़ा हुआ है ये तो है लेट्स गो टू दैट फील्ड डिपो लड़ाई चल रही है हाँ ओह जॉर्ज पॉइंट नाइस इंडस्ट्रियल मैग्नेट आई नीड दैट केमिकल्स ब्लूप्रिंट भी ऐसा कर सकते जॉर्ज मैक का फ्री लोड आउट हाँ हर चीज का ब्लूप्रिंट होता है आउटस्कर्ट्स अरे नहीं रेयर है आउटस्कर्ट्स में लूटो पूछ रहा हूँ लाइट बल्ब पावर केबल पार्ट तुम लोग क्या अभी वही कर रहे हो क्या हाइड्रेट पे हम लोग ना ब्लूप्रिंट रन पे हो गया नहीं ब्लूप्रिंट रन नहीं नॉट एक्सक्लूसिवली बट अभी तक वही बाहर ही घूम रहे ले लिया कि अंदर का फीड रेट हाँ अच्छा नहीं बीएमओ है उठा लो इधर बल्ब वगैरह किसी को चाहिए तो ले लो या एक और ले
रैंक Rattler. बैटरी 2 इस पे चल ना, इस पे चल पैटर्न हाउस पे। और मैं भी फुल हूँ, लाइक अगर पैरा 1 रख ले। वी वन एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं एक्चुअली। मेरे पे मुझे कॉम्प्लेक्स गन पार्ट्स मिले। चल आगे चलता है, चल लूटते थोड़ा, इतना जल्दी क्या ट्रेडर्स के फायदा है? आउटपुट पे चल इधर। हाँ नहीं मेरे साइड है इधर क्या चलता फील्ड क्रेट मिलता है, फील्ड क्रेट ही मिलता है किधर किधर तो इधर जाओ। आई डाउट ए आर्क अरे तेरी तरफ फास्ट पार है लेफ्ट ऑरेंज देख लिया। मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, मुझे मोटर चाहिए था, वही मिल गया। ये लूटेड है भाई, ये जगह लूटेड है। वियर्ड सकता है उस बिल्डिंग पे चलना, मैं जो मांगता हूँ ये एक्सट्रैक्ट करे। सो मैं बोल दूँ, मैं भी कर सकता हूँ। क्या पैटर्न हाउस चलना है? Head home at the हाँ, North Complex elevator. पैटर्न हाउस नॉमिनेटिव है। Let's go to the pattern house. चल चल शुड बी इन 9 मिनट। देख Let's go to the pattern जितना house. लेट एक्सट्रैक्ट करोगे ना, चांसेस इतना है कि लोग निकल चुके हैं, तुम काम नहीं निकल सकते। या फिर कोई रैड करके बैठा हुआ है, एक ही एक्सट्रैक्शन जोन है इसीलिए। अरे मैं बहुत बार मरा हूँ, बहुत बड़े वही होता है, वही वो बैठे रहते हैं जब एक एक कम एक्सट्रैक्शन जोन है तो वो लोग और वो जॉल्ट माइंड लगाते हैं, झाट बराबर कुछ कर नहीं कर सकते। जॉल्ट माइंड स्टन होता है और वो ब्लेज ग्रेनेड से आग लगता है। इतना ओपी है, तुम रोल कुछ नहीं कर सकते, लाइक 0.1 मीटर की स्पीड में चल सकते हो बस। अरे कुछ नहीं कर सकते भाई, ऐसा हाथ फैला के करते रहते हो। हाइकिंग जैसे जा रहे हैं भाई पहाड़ों के बीच से। बेटा मैं जो कहते हैं पहाड़ों ब्रो, मैं बग हो गया, मुझे पुश करता। हाँ थैंक यू। नहीं मैं खुद फंस गया। ये प्रेस करते रहे, एस प्रेस करते रहे। और फिक्स स्टक प्लेयर। अरे इधर से तो अपन स्पॉन हुए हैं। पैटर्न हाउस में लूटेड होगा वो स्पॉट, उसी तरह जा रही है। एक्सट्रैक्ट कर लेके, एक्सट्रैक्ट है अवेलेबल, कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ हाँ है कर लेते 7 मिनट 7 मिनट ही है, कर दो। कॉल कर दिया। नियॉन रॉकेट है। कॉल करके अंदर जा। अरे बंदा किधर है बंदे? बंदे छोड़ अंदर चल, अंदर जा उसको रॉबी के आगे नहीं देगा, नियॉन अंदर ओ रुक एक सेकंड
अभी गोली नहीं चलेगा। अभी नहीं खाएगा। अरे बंदे मार रहे, बंदे मार रहे, बंदे नेट डाल रहे थे, देखा? My goodness bro. चल हो गया मेरा, तुम लोग खेलो। क्लोज वन। मैं फिर से सेफ पॉकेट में डालना भूल गया था, मैं जॉल्ट में। अरे भाई तुझे आज सबसे अच्छे ब्लूप्रिंट मिल रहे हैं। मैं शायद कुछ अपग्रेड सकता हूँ। रिफाइनरी लेवल 3 हो गया मेरा। मैं पावर रॉड क्राफ्ट कर सकता हूँ। Nice. अरे जिधर आप भी गए थे ना, उधर पावर रॉड लगा के अंदर घुस सकते थे। पावर रॉड करता है क्या गाइस? एक दरवाजा खोलता है और कुछ तो वेपन्स बनाने के लिए लगता है। हाँ वेपन वाला मेरे को मिला है। हाँ इन्वाइट कर फिर से। हाँ रुक। स्नैपिंग और हेवी शील्ड। रायन के सलाह रहा है ना, रुक मैं पार्टी लीव कर रहा हूँ, ठीक है? ले मैं हाँ ठीक है, यार तू भी आ। इनवाइट टू पार्टी, इनवाइट टू पार्टी। प्लीज ग्रेनेड्स। मैप हुक तो है वैसे मेरे पे तो। रॉकेट ही है। क्या करना है बताओ? मेरे पास कुछ चाबी है। की है तेरे पे? मेरे पे भी की है। कौन से मैप का है बोल? मेरे ब्लू गेट का है, चल रहा है ब्लू गेट। नाइट्रेट कहाँ चल रहा है? उस वाले पे चल रहा है। हाँ वेट नाइट्रेट बड़ी सिटी पे चल रहा है, चल रहा है। मेरे पास है डैम टेस्टिंग का है, ब्लू गेट का है और स्पेस पोर्ट का। बरीड का नहीं है मेरे पास। बरीड का मेरे भी नहीं है बे, मेरा भी नहीं है क्या तेरा? बरीड कर कुछ चेक। मेरे पे नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास ब्लू गेट का है, सेलर की, डैम सर्वेलेंस की। Finally, a friendly face. मेरा भी 2 डैम, एक ब्लू गेट। रायन कैसल तेरा भी वही है क्या? Thought you might like that. मेरा स्पेस, डैम एंड ब्लू। ब्लू गेट में कुछ चल रहा है क्या? ब्लू गेट में कुछ नहीं है, स्पेस पोर्ट पे भी कुछ नहीं है। डैम में? स्पेस पोर्ट पे चल रहा है कैश, अनकवर्ड कैश का इवेंट चल रहा है। डैम पे कुछ नहीं है अभी। बोलो। ठीक है, एनीवे चल के देखते हैं क्या। रिगार्डलेस एक बार की रन करके देखते हैं, क्या पता नॉर्मल की रन वर्थ इट नहीं होगा क्या? हाँ होगा, ऑब्वियसली हो सकता है। वो ट्राई करके देखते हैं। किस पे बोल? ब्लू गेट या स्पेस पोर्ट? डैम टेस्टिंग चलते थे, बस 3 डैम है ना सबके पास। एक ही नहीं है थिंक, मेरे पे 2 है। बस एक ही डैम टेस्टिंग है, तेरे पास 2 है ना? तो मेरा डैम सर्वेलेंस है, डैम सर्वेलेंस है मेरा। नाइट टाइम जा रहे हैं, डे टाइम तो मैं रेडर हैच रख लेता हूँ अपने पॉकेट में। रख रेडर हैच। मैं भी एक रेडर हैच रख के रखा हूँ। बट डीफेब भी ले लो बे सब लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट हो रिवाइव करने के लिए। अरे मेरे पास स्मोक है, एड्रेनालिन की जगह लेता हूँ डिफेब। मैं जॉल्ट माइन भी लिया हूँ 2। एक रखा हूँ और एक और डाल देता हूँ ना। शील्ड रिचार्जर, डिफेब 2, शील्ड रिचार्जर, बैंडेड और कैम गुड। ग्रेनेड है, थ्रोएबल्स कुछ लिए हो तुम लोग? मैं स्मोक लिया हूँ, ग्रेनेड लेना है। थ्रोएबल लो सब लोग लो। अरे भाई मेरे पास शॉट्स ही नहीं है ब्रदर। अबे अबे बैकपैक पे ले स्वैप कर लेना। फायरबॉल बर्नर है। करेक्ट। बट वो बीटी तो कॉम्बैट के बीच में स्वैप करना है वैसे। कर दो, मैं तो करता हूँ। मैं तो एक्स्ट्रा आइटम्स बैकपैक पे ले गया था। हां बीटी नहीं एक्चुअली यूज्ड टू नहीं है, दिमाग में आता नहीं। वही मैं लाइट इम्पैक्ट करके लेके जा रहा हूँ। स्वैप कर सकता है वही। हां
चलो क्या बोलते हैं ये डैम चल रहा है ना, चलो आई एम रेडी। हाँ तू ले जा रहा है की मेरे पास एक डेटा हैच की है। मैं माइंस उठाना है कि नहीं? मैं वाटर ट्रीटमेंट बिल्डिंग वाला की लेके जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, एक एक की लेके जाता है क्योंकि मेरे पास एक सेफ पॉकेट में है डेटा हैच की ना, तो मैं दूसरा सेफ पॉकेट उपाय करके रखूंगा तो टॉप टियर लूट वेस्ट चला जाएगा, मतलब अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। चलो रेडी करना है ना, टैब ये ले रेडी। अच्छा सुन रुक रुक, मैं क्रॉस प्ले ऑफ करके क्या करूँ क्या? नहीं मत कर, क्रॉस प्ले करने से कंसोल प्लेयर्स हट जाएंगे। हाँ दैट्स गुड ओनली। नहीं, कंसोल प्लेयर्स आर मोर फ्रेंडली। उल्टा नहीं भाई वो तो अभी बोल रहे हो। क्या बोल रहे तुम लिटरली ऑपोजिट बोल रहे हो। पोस्ट देख था भाई। हाँ वही, चलो मैं ऑफ कर दिया। अच्छा क्रॉस प्ले डिसेबल बाय पार्टी मेंबर, तुम लोग भी करो तो डिसेबल। सेटिंग्स पे जाओ। हाँ हो गया, गेम यार प्ले तो में ही क्या? है, सेटिंग्स फिर गेम प्ले में ही है, सामने ही है गेम तेरे प्ले को। पहले टैब में हो। थर्ड पोजीशन फॉर क्रॉस प्ले ऑन ऑफ। ठीक है देखते हैं, ऑब्वियसली चलो बाय एक गेम से गाइस, तो जज मैं नहीं कर इसके पाएंगे लिए जा बट रहा हूँ। ठीक है चलो बाय बाय। बाय बाय। अरे पैसे टाक ना. अरे शेवटचा दिवस आहे उद्या एक्सडीचा. हा 15 दिवस झाले ते पडले. Let's move to that location. काय? अरे ते स्प्लिट बघ ना, स्प्लिट लय दिवस झाला ते. Remember to grab as many goodies as you can from those medical facilities. Just resist the urge to sit on a horde of syringes, okay?
Don't shoot. Okay. Not wanna shoot. Go to that fuel depot.
तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं मान गाइस। आज हम लोग बात करने वाले कुछ बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी से रिलेटेड शॉकिंग रिपोर्ट के बारे में। तो कुछ बड़े बॉलीवुड स्टार जैसे कि इनका नाम आया इन इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम लिंक्ड ड्रग पार्टीज। रिसेंटली मुंबई पुलिस के एंटी नार्कोटिक्स सेल ने एक मेजर ड्रग सिंडिकेट को बस्ट किया था, जो कि अपैरेंटली दाऊद इब्राहिम के एक एसोसिएट रन कर रहे थे। अभी रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि सिंडिकेट को दुबई से रन किया जा रहा था। अकॉर्डिंग टू सम डॉक्यूमेंट्स, सिंडिकेट के ड्रग पार्टीज को एलिजिडली कुछ बड़े बॉलीवुड स्टार्स भी अटेंड करते थे, जिनमें की नाम है श्रद्धा कपूर, एलिशा पार्कर, नोरा फतेही, ओरी एंड मेनी अदर पीपल। नाउ ऐसे ये खाली एक रिपोर्ट है, तो नोरा फतेही तो ये रिपोर्ट को कंप्लीटली डिनाई करते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखी कि मैं कभी भी पार्टीज में नहीं जाती हूं, आई एम कॉन्स्टेंटली ऑन फ्लाइट्स लाइक वर्कहोलिक, आई डोंट हैव अ पर्सनल लाइफ। मैं उन जैसे लोगों के साथ एसोसिएट नहीं करती। जब मेरे को छुट्टी मिलता है विद माय हाई स्कूल फ्रेंड्स, मैं पूरे टाइम अपने ड्रीम्स एंड गोल्स को अचीव करने पर लगाती हूं। ये चीज पहले भी मेरे साथ हुआ है, अभी फिर से मेरे ऊपर झूठ फैलाया जा रहा है। प्लीज मेरे नाम एंड इमेज को ऐसे सिचुएशंस में लाना बंद करो। दे हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद मी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले वसीम वर्सेस थारा भाई जोगिंदर के ह्यूज सीरियस लफड़ा के बारे में। तो शायद आपको याद होगा, सालों पहले राउंड 12 के वसीम अरेस्ट हुए थे। बेसिकली राउंड 12 चैनल से एक कंट्रोवर्शियल क्लिप वायरल गया था। छोटा सा मैं आपको पार्ट प्ले करके दिखा देता हूं। राधा क्या कर रही है इंग्लिश में? सर राधा का मैंने बेटा मैंने खुद देखा, तुमने आपको इसी को लेकर उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। तो वसीम को अरेस्ट भी किया गया था। वो लोग अपनी तरफ से अपोलोजाइज भी किया था, इवेंचुअली जेल से बाहर आ गए थे वसीम। बट उसी चीज को लेकर जब थारा भाई जोगिंदर का फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन हुआ विद वसीम, तो उन दोनों के बीच में एक सीरियस लफड़ा स्टार्ट हो गया। छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पे क्वेश्चन है, उस टाइम क्या क्वेश्चन है, क्या बोला था मैंने? आपने राजा जी को बारे में क्या बोला था? तुम्हें पता? गाइडलाइन क्या पता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तूने कैसे बोला? तू बता देगा, तू बेवकूफ है, तूने कहा बेवकूफ है। बोली तो भाई नाउ ये वीडियो जैसे जोगिंदर पोस्ट किया, उसके बाद वसीम की तरफ से ये इंस्टाग्राम स्टोरी आया, जहां पर वो इनडायरेक्टली ऑब्वियसली जोगिंदर को रोस्ट कर रहे हैं विद द कैप्शन बताओ कौन है। अब पता नहीं यार, लोगों को थोड़ा सा डाउट्स हो रहा है कि ये स्क्रिप्टेड लफड़ा था या फिर सीरियस। आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बट एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी वर्सेस रणवीर शोरे के बारे में। तो एक्टर रणवीर शोरे ध्रुव राठी को इस चीज के लिए थोड़ा सा स्लैम की। बेसिकली उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट में जब इंटरव्यूअर उनसे ध्रुव राठी से रिलेटेड ओपिनियन मांगे थे, तब उन्होंने कहा था कि आई कॉल हिम सुपंदी। मेरा पॉइंट है कि क्या आप कंट्रोल कर सकते हो क्या हर किसी की जिंदगी को? पॉइंट इज कि एवरी पर्सन जहां से भी वो आ रहा है, दे हैव अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू ऑन थिंग्स, एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे वो अपने लीनिंग्स, चाहे सोशल, पॉलिटिकल, पर्सनल प्रेफरेंस, उनको बेस करता है। तो अगर कोई पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस या फिर पर्सनल प्रेफरेंसेस के बेसिस में जज करता है दूसरे को, देन आई थिंक यू आर बीइंग फुलिश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले आरसीबी के बारे में। तो आरसीबी टीम को इस वजह से थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। गाइस कल आईपीएल 2026 का रिटेंशन एंड रिलीज लिस्ट आ गया। पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी स्पोर्ट्स चैनल में वीडियो बना दिया, आप जाकर देख लेना। तो यही रिटेंशन लिस्ट जब आरसीबी ने भी रिलीज किया, तो वहां पर क्रिकेटर यश दयाल का भी नाम था कि वो उनको रिटेन कर रहे हैं अपनी टीम में। ये प्लेयर करंटली टेप एलिगेशंस फेस कर रहे हैं, इसलिए आरसीबी को थोड़ा स्लैम किया जा रहा है। बेसिकली उनके ऊपर 2 सीरियस क्रिमिनल चार्जेस किए गए बाय 2 सेपरेट पीपल, जिनमें से एक केस तो बहुत ही सीरियस है, पॉक्सो एक्ट। इसलिए बहुत सारे लोग आरसीबी फ्रेंचाइजी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे प्लेयर को आप क्यों रिटेन कर रहे हो। बट बहुत सारे लोग उनको डिफेंड भी कर रहे हैं कि ये करंटली एलिगेशंस ही, वर्डिक्ट नहीं आया है, इज येट टू बी प्रूवन, इसलिए ही इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले गौरव कपूर एंड गौरव कपूर के बारे में। तो दोनों गौरव कपूर का जब मीटअप हुआ, तब उनके तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन आया था। फॉर ऑल दोस पीपल हु थिंक एक नाम के तो आप नहीं कर सकते हैं, पर नाइट डिफरेंस देख लो आप देखिए भाई, हमें से नहीं कर सकते। मेरा सफर है दिवासा भाई, भगवान ने सारी आगे बार पे दे दी, बात सब दे दी और सारी कॉमेडी एक को दे दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान के बारे में। तो दुबई में शाहरुख खान के नाम पर 4000 करोड़ का प्रॉपर्टी बिल्ड किया जा रहा है, जहां ये हिस्टोरिक रियल एस्टेट के टावर का नाम होगा शाहरुख। बताया जा रहा है कि इट विल बी 55 to 56 स्टोरीज लॉन्ग। इसका कमर्शियल यूनिट्स का प्राइस रहेगा अराउंड $460,000 एंड इनके डेवलपर्स ने टारगेट रखा है कंप्लीशन डेट का बाय सेकंड क्वार्टर ऑफ 2029। इस चीज पर शाहरुख रिएक्ट करते हुए कहे कि मेरी मां वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा ऑनर है, जब मेरे बच्चे यहां पर आएंगे आई विल टेल देम पापा का नाम लिखा है पापा की बिल्डिंग में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले एकॉन के बारे में। तो क्या बेंगलुरु कॉन्सर्ट के दौरान रैपर एकॉन के पैंट्स को पुल डाउन किया जा रहा था? जहां गाइस आप लोग वो कॉन्सर्ट से ये वाला क्लिप देख सकते हो, एकॉन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहे थे, उनका पैंट्स थोड़ा सा नीचे शायद से किसी ने खींच दिया था, बट स्टिल ही केप्ट ऑन सिंगिंग। उन्होंने कुछ सीन क्रिएट नहीं किया। अब काफी सारे लोगों को ये चीज फनी लगा, पीपल स्टार्टेड कमेंटिंग WTF आर दे डूइंग, वो लोग लाफिंग इमोजी स्पैम कर रहे थे, बट बहुत सारे लोगों को ये चीज इनअप्रोप्रिएट भी लगा। एक कमेंट आया, दिस इज सैड, किया जा रहा था लाइव ऑन स्टेज, वो एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, प्लीज ऐसा मत करो उनके साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क क्लेम किया दैट ही इज एन एलियन। यस, उनके अराउंड ये बातें चलते रहती है कि भाई इलॉन मस्क मार्स से है, ही इज एन एलियन। तो वो भी इस चीज को जोकिंगली एडमिट करते हुए स्टेटमेंट दिया रिसेंटली कि भाई मैं तो लोगों को बोलते रहता हूं आई एम एन एलियन, बट नोबडी बिलीव्स मी। मेरे पास एक ग्रीन कार्ड भी है, वहां पर लिटरली लिखा हुआ है एलियन रजिस्ट्रेशन, तो मेरे पास तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रूफ भी है, स्टिल लोग मानते नहीं, लगता है मेरे को रजिस्टर वगैरह करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले जेनजी कंटेंट क्रिएटर्स से रिलेटेड ह्यूज रिपोर्ट के बारे में। तो क्या आप लोगों को पता है कि 83% ऑफ द जेनजी इंडियंस आर कंटेंट क्रिएटर्स? लिटरली YouTube इंडिया स्मिथ गेजर की तरफ से एक रिपोर्ट आया, वहां पर ये चीज क्लेम किया गया। एंड इतना ही नहीं, the reported even highlighted कि 91% of the Gen Z fans actively YouTube fandoms में involved रहते हैं, and 93% of the Gen Z people actively weekly use करते हैं YouTube को to follow what they love। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग वायरल वीडियो के बारे में। So यूपी से वाला क्लिप सरफेस कर रहा है, जहां पर एक गैंग विक्टिम लिटरली भाग के पुलिस डीआईजी के पास जा रही थी कि 2 ऑफ द अक्यूज्ड को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है, प्लीज मेरे को मदद करिए। कॉप्स ने डीआईजी के पास जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट स्टिल जैसे तैसे मैनेज करके वो डीआईजी तक पहुंची, अपने बातों को सुनाई, उन्होंने भी बात सुना उनका। विक्टिम ने अपने अलेज्ड गैंग के बारे में बताया कि 6 मेन इन्वॉल्व थे,
4 अक्यूज को तो अरेस्ट कर लिया गया, बट 2 लोग अभी भी भागे हुए, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। तो डीआईजी ने उनको सामने एश्योरेंस दिया कि 2 अब्सकॉन्डिंग अक्यूज जो है उनको जल्द ही अरेस्ट किया जाएगा एंड शी विल गेट जस्टिस। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्लास 6 स्कूल गर्ल के बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो एलिजिडली जब क्लास 6 स्टूडेंट स्कूल लेट पहुंची थी 10 मिनट, तब टीचर ने उनसे 100 सिटअप्स करवाया था एज पनिशमेंट एंड इवेंचुअली शी पास्ड अवे। उनकी मदर ने ये एलिगेशंस लगाए कि वो इनह्यूमन पनिशमेंट की वजह से उनकी डॉटर को हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आया एंड शी पास्ड अवे। शी क्लेम्ड कि आफ्टर द पनिशमेंट वो बच्ची को बहुत सीवियर पेन होने लगा इन हर नेक एंड बैक, वो खड़े भी वापस नहीं हो पा रही थी। एंड जब एलिजिडली वो स्कूल एंड टीचर को जाकर कन्फ्रंट की कि आपने ऐसा इनह्यूमन पनिशमेंट क्यों दिया मेरे बच्ची को, तब टीचर ने रिपोर्टेडली अपने एक्शंस को जस्टिफाई किया बाय सेइंग कि जब हम लोग ऐसे स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाते हैं तो पेरेंट्स आकर हमें कहते हैं कि हम आपको फीस पे कर रहे हैं, आपको डिसिप्लिन बनाए रखना होगा ना। तो अभी वहां के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया कि एक इंक्वायरी इज बीइंग कंडक्टेड एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग को एग्जैक्ट कॉज ऑफ पता चलेगा क्या जेन्युइनली वो पनिशमेंट की वजह से हुआ या फिर कुछ और भी रीजन हो सकता है। एज ऑफ नाउ कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं फाइल किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बाइकर वर्सेस पुलिस कलेश के बारे में। तो बिहार के एक बाइकर ने वीडियो शेयर किया कि कैसे पुलिस वाले उनको गाली दे रहे थे एंड इवन पीटे तक। एग्जैक्टली क्या हुआ उनके साथ, पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको ये क्लिप में समझ आ जाएगा। बोलिए ना, खोला सर, ये सर सॉरी टूट जाएगा सर, मैं यहाँ सर ठीक है, खोल देना, एक्सप्लोर करते हैं जगह दिखना रहता है। क्यों ऐसा क्या है? तो ये जो वीडियो अभी आप लोगों ने देखा, ये पटना 6 लाइन का वीडियो है। पहले हम लोग गए थे यहाँ पे शूट के लिए, तब कुछ स्टंट ये सब कर भी नहीं रहे थे हम लोग, बस नॉर्मल एक कैमरा हाथ में था भाई, इस वजह से ही इन लोग मिलके और मारे हुए हैं बुरी तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट के बारे में। एक स्विगी कस्टमर क्लेम किया कि उन्हें 3 रुपए का रिफंड ऑफर किया गया ओवर एक्सपायर्ड आइसक्रीम। लिटरली फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने आइसक्रीम का फोटो शेयर किया कि इसका एमआरपी 100 रुपीस है एंड लिटरली उनको स्विगी की तरफ से एक्सपायर्ड आइसक्रीम दिया गया। तो ऑब्वियसली वो कस्टमर सपोर्ट को रीच आउट किए, फोटो वीडियो वगैरह शेयर किए, बट गेस व्हाट, कस्टमर सपोर्ट की तरफ से क्या रिप्लाई आता है कि आप एलिजिबल हो फॉर अ रिफंड ऑफ 3 रुपीस। तो लोग वही बोल रहे हैं, दिस इज सो एम्बैरेसिंग यार। एनीवेज चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यू सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप Fine, it's officially time. Today we're playing Ruined Giant Berserky Cycle with Goblin Curse Rage. So, the Berserker is basically intended to be played with the Ruined Giant. Like, the 2 cards I think came out in the same season, and part of the gimmick is, okay little bro, how about you slow down there? Part of the gimmick is that obviously every 3rd hit from the Ruined Giant, the enchanted hit does like 300 fucking damage. So I've got Dark Goblin which hits fast, and I got Berserky, and we're gonna see if we can win some games with fucking Ruined Giant. Anyway, let's go for this. And then let's go for a dart, and you can see that 3rd hit comes pretty quick, and it just kind of beat that down, except my whole, oh no, you know what, we're going to go for a Goblin Curse. Please get at least 1 before they all leave, that way I can get a lot of goblins, please, yes, kind of. Okay, that was pretty shit, I'm not going to lie. Didn't have the elixir to kill everything, but this is a matchup I'm actually looking forward to, because I have Goblin Curse Rage for the Skeleton Army, I have the Ruined Giant to kite, Berserky to go crazy, but yeah, that's going to be the main push. Take out Swarm cards with Goblin Curse Rage. If they don't have any Swarm cards, just Rage the Ruined Giant and whatever like Bats behind or Dark Goblin behind, and then try and get a Goblin Curse Rage, because Ruined Giant is fucking ass cheeks. Ruined Giant is ass. And, okay, once that Ice Spirit jumps, let's go. Fuck it. Let's go for a Dark Goblin, and let's see if we can get another enchant right now. And that should be, okay, you know what? Let's go for a Goblin Curse right now. And even though the Ruined Giant dies, the enchants last like a little bit longer, so let's see how long the enchant lasts on that. No, it just ran out before the 3rd hit. Okay, fuck's sakes. I think we're going to be able to beat this guy, though. Let's go for a Berserky as well, and it should be able to freeze before it gets a hit. Okay, that was fucking close. And I'm dying a little bit, I'm not gonna lie. I'm a little bit sick. It's like, when you get sick, there's like this weird tiredness you begin to feel. It's like not normal tiredness, it's like the body achy tiredness. And I feel that. It's like, it feels like no matter how much you just lie down and rest, it just doesn't do anything. It does fuck all and you just feel like still tired. That's how I feel right now. Anyway, he's got Mega Knight, so I'm probably just gonna, you know what, stop wasting elixir and go for a Ruined Giant in the back. Maybe try and build up a fucking Goliath push. And Little Bro is just doing fuck all, so I'm just gonna keep building up elixir right now. I don't know if he's just waiting for that to cross the bridge, but either way, I'm gonna go for another Ruined Giant. What the fuck is Bro doing? Little Bro is just out here. I'm just building up a fucking Ruined Giant army. And what the fuck? Alright, he's gonna do it. I know he's gonna fucking do it. Alright, we got 1,000 enchanted units, and the extra damage just shredded that Mega Knight down. I don't even give a fuck. Let's go for this. Okay, I got like 1 goblin there. Now we go for another Ruined Giant.
bang, the Dark Goblin's enchanted, and every third hit is just... Bro, listen, Fabiano, I don't know what the fuck you're doing, okay? You're at 15,000 trophies, and you just leaked Elixir until I got a massive push, and then you're angry that you got 3 grand. Either that, or he... बोल के जेवायलाच काय होय उद्याचा अभ्यास झाला अगं नाही आहे आता नाही आहे उद्या नाही आहे हॅलो उद्या नाही आहे म्हणलं बाबा बर बर हा चल आणि काय काय नाही प्रोजेक्टचं काम करायला लागलोय प्रोजेक्ट करायला लागलोय बर बर करा 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 हा हा Lagged. Either way, I don't give a fuck because I have no remorse and I'm a shell of a human. Alright, we're gonna smoke. This guy. We're gonna smoke this guy. We might even get 15,000 in today's video because I can't deal with these chumps anymore. These little fucking rodents. If you get 3 crown by Ruin Giant, then something's going wrong. Alright, so I can activate King Tower. And I have to say, the people at 15,000 trophies are really fucking bad. And it makes no sense to me because you'd think that's the top of the ladder. Like, it's like the top of ranked is insanely competitive, but then the top of Trophy Road is like, half these guys are bots. Anyway, I'm going to go for a Berserky here to get the enchant and try and see if I can sneak some damage in the other lane because the Ruin Giant's just going to get fucked by the Skami. Okay, you know what? If Berserky can get some good damage on that 3rd hit there, okay, that's not bad. Because I don't really have the best answers for this. Alright, let's go like this. I thought that that was going to hit the Sparky there. Okay, at least that will freeze the mini P.E.K.K.A. So I don't take too much damage. And he's going to go for a Vines, and it's not going to kill my Dark Goblin, so I'll definitely take that. But okay, this is finally going to be a competitive match because he's got mini P.E.K.K.A. and Sparky, which is good against my Ruin Giant. So I kind of just want to go aggressive, I'm not going to lie. I kind of just want to go aggressive on the left. But he does have Sparky. Fuck it, let's just do it for the fucking memes. Let's go for it. I've been talking a lot of shit. Let's see if he's going to go for a... Okay, why did it enchant the fucking E-Spirit? Okay, at least Berserky's going to go crazy here. And now the Dark Goblin's going to go crazy on the tower. Oh, so close to getting that extra hit. Okay, that's fine with me. Now we can go for Skeletons here. Easy peasy counter. Thank God. And I might be going to Scotland again soon. I know it doesn't really change anything in terms of viewing experience, but if you're a viewer of this channel, it means the background's gonna change, man. That's gonna be insane. New background? Yeah, hell yeah, dude. Not the kitchen anymore. Hell yeah. Anyway, I'm gonna go for a Dark because it's gonna enchant it and hopefully snipe the Sparky. And then I want to go for another Ruin Giant push. Let's go for a double Ruin Giant push. That's fine. Let's go for a Dart. And then
Let's see. I'm actually just going to Goblin Curse Rage that to try and kill the Firecracker because that thing is fucking annoying as shit. And then hopefully that Enchanted Dart can just go crazy against that. Enchanted Evolved Dark Goblin. Holy smokes. Alright, let's see if Little Bro's going to go for a... I was actually meant to be a Dark Goblin. A Sparky in the back here. I think he will, so let's go like this. Harass over lane. Go with this for the Mini P.E.K.K.A. Ooh. Okay, maybe we can kill that. I think it's going to die to the Goblin Curse. Nice. And wait, is that... The Goblin's going to be enchanted... Oh, the Mini P.E.K.K.A. fucking sniped it. Alright, let's go for a Dart to start sniping the Sparky. Let's go for this, and then let's go for East Spirit. Okay, he is going to log it. Fair. And then, alright, let's go crazy on the defense here. We're going to have to hope that... Oh, the Sparky went for that. Oh, shit. Okay, this is kind of scary, I'm not going to lie. We're going to have to try not to fumble here. And then I hope the Sparky shoots that. Okay, we got fucking saved there, I'm not gonna lie. Going against Log Vine's Mini P.E.K.K.A. Sparky is not actually the matchup I wanted. It's like some guy just leaks Elixir when you fucking try and build up a push, and then you got this guy. Anyway, he's gonna Sparky out the lane, I hope. So let's go aggressive, perfect timing, and then let's just go for a Rage, because he doesn't have like a... He doesn't have like a skeleton army, so see if we can get damage as quickly as possible. And Enchanted Berserk, he's going to do so much damage here. Holy fuck. Hits so quickly, and that's going to take down the fucking tower. Yes, that should be good game. Just need to cycle a couple spells. I'm not fucking choking after yesterday's generational fumble. Okay, that scared me a little bit. I forgot I was like, okay. You know what, we're just going to take that. That's 2 wins. And that's going to put us... We're getting 15,000 in this video, I don't even care. Alright, open some unlucky drops that do... You know what? Maybe level 16 is not the worst thing for me, because I'm just... They've got this stupid fucking gold cap. And I can't get anything else. Like, if I get anything other than EWCs in this chest, then... Okay, I got EWCs. It's the only thing I can hold. Now, how many trophies am I... Okay. So I am basically 1 game away. If we win this... We're there, because it's going to give me 150 trophies, which will be enough. That is quick maths, my slimes. Stay in school. Unless, of course, you plan on making Clash Royale content, then drop out. It's the only... I didn't even drop out, though. I only dropped out of uni. Bring me back. I actually remember. I remember telling my mate, like, as sad as it sounds, I'd rather make Clash content than doing anything. I'd rather be broke. I remember I told him, I'd rather be broke making Clash content than being rich doing something I hate. I've always been like that for some reason. I don't know why. Like, I've never been a person that can... Like, sometimes I enjoy things that are not enjoyable, but I always have to enjoy it, or at least find a way to enjoy it. I feel like that's the way you gotta live, you know? Even if you're doing some shit you don't like, find parts of it you like or make it enjoyable. I don't know, maybe that's been my little superpower. Because, yeah, otherwise you're doomed. And I was actually like, I was feeling pretty, I was joking about like being depressed and shit in like some videos. That was kind of half true, but also very true. And then I watched one of my own videos. It was, I think it was the Sneaky Golem video, where it was titled Sneaky. And within the first few seconds, I was like, if you're depressed, just hang out with people you like. And I was like, wait, I'm a genius. Past me is a genius. And basically... बोलना हाँ फ्लैट पे किधर डिनर करने जाते हैं अरे मैंने ऑर्डर कर दिया अरे रोज क्या है बाहर का खाने का में मतलब हाँ एक्चुअली मैं मर जाएगा कानू क्या फिर तूने इसका डेनकिन यूनिवर्सिटी का भरा ना नहीं भरा We pleased to inform you have been selected बोल रहा है मुझे तुझे देख मैंने CGPA 7.1 रखा है अरे मैंने फॉर्म कर दिया था क्योंकि पता है क्यों बाद में पता चला कि अच्छा हाँ बीसी में भी तो थर्ड ईयर में ट्रैक सिलेक्ट करना होता है और उसमें साइबर सिक्योरिटी का ट्रैक होता है भड़वे अरे यार क्या कर सकते हैं यार हो जाता है कोई नहीं तो मैं क्या करूँ अब जाएगा तो तू गांड मरी के भड़वे है भाई
चल डिंकन यूनिवर्सिटी का चूतिया है क्या भाई? मैं तेरे कुछ भी बोलूं, मैं करूंगा ही नहीं तेरे आपसे। माँ चुप। क्या पता था मेरे को, तो गौरी ने बोला करने के लिए मैंने किया। जा जा जा, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा तुझे। तू जा खा के आ अच्छे सा, और जाके घर पे जाके हक के आ, ठीक है? और कुछ नहीं कर सकता तू। कब आ रहे हैं तेरा? मेरा भी एक 20 मिनट में आ रहा है। तो लेके गेमिंग कैफे आना। अरे नहीं बे, बस हो गया भाई मेरा, बहुत पैसे चले गए हैं। ये 3 दिन में 500-600 उड़ा चुका हूँ मैं। अबे तो खाना मत ऑर्डर करना बाहर से। कल से मैं तेरे साथ खाता हूँ, ठीक है? भाई बट आज चल गेमिंग कैफे, क्योंकि कल से मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि आज लास्ट डेट है। आज के बाद सुबह ए, नहीं नहीं बे, गेमिंग कैफे मत बुला। कुछ गेमिंग चल, मैं नहीं रिटायर। नहीं 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 नहीं, गेमिंग कैफे हो गया मेरा, मन भर गया है। मेरे को वैसे भी असाइनमेंट लिखना है आईएएस का, कल उसका सबमिशन है। बड़ी सात सबमिशन है, 17 के 12 बजे तक करना था। 12 AM, 12 1 AM। 17, आज 16 है। अभी तो 17 रात को हो जाएगा ना भाभी। 12 PM मतलब दोपहर के 12 रहता है वो। AM लिखा है ना मैं। PM लिखा है। AM रहे तो रात के 12 बजे है। हाँ, रुक, सुबह के 12 बजे मतलब टेक्निकली। 2:30 और PM। लास्ट डेट है आपका फर्स्ट असाइनमेंट का। ये सिर्फ अच्छा बता दिया, क्या करना है सिर्फ का? 3 पेज है। 3 पेज लिखने बैठ रहा हूँ मैं अभी। देखो, मैं जस्ट लिखने बैठ रहा। भेजो। भेज भेज। क्या नाम है तेरा? गडवई, सॉरी मस्की। देख आ गया होगा। हेलो, भेज दिया क्या? हेलो, भेज दिया क्या? भेजा ना। मैंने एसीएफ का देखा ही नहीं था। एसीएफ और आईएस का कितना 20 तारीख को है तो। मेरा वही लैब मैनुअल है क्या है इसका? किसका? ISACF लैब मैनुअल्स। आईएस का? नहीं बे। अबे भेजना, कल लिखना है। मुझे नहीं मालूम भाई। मेक हार्ड कॉपी, नो पैरामेडिक नीडेड। एसीएफ का भाई किसी से चुराना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा अपना। ISACF का क्या? कौन सा बोल रहे हैं? एसीएफ वगैरह सबका लैब मैनुअल मैं तो नहीं करने वाला, मतलब मेरे पहचान में से का। नाम ही रीनेम करना है, बट कहाँ पे है क्या किसी के पास? वही तो मैं देखता हूँ तुझे। कौन सा चाहिए वैसे? ACF, IS और AIML। तो फिर सबका ही बड़े में बोलना। देखते हैं मैं ढूंढता हूँ सबसे, पूछता हूँ। ठीक है, चल बाय। और गेमिंग कैफे कब आएगा फिर? नहीं 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 आऊंगा। मंथ के लास्ट डे है। अरे लास्ट डे मेरा लास्ट डे है भाई, मेरे को करना नहीं है क्या? मेरे 2 सबमिशंस पहले ही ये हो चुके हैं, मिस हो चुके हैं। कौन से? AIML का, असाइनमेंट 2 का। सब अभी तक अलाउड है करना। अरे अपलोड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा तो मुझे। नहीं, अपलोड का ऑप्शन ही नहीं है मुझे। और ये एसीएफ का कुछ तो, एएनएस सीएनएस का असाइनमेंट 2। अबे CNS का तो करना था भाई, उसने एक्सटेंड किया था भाई। मैंने उसे मैसेज किया कि सर मेरा फर्स्ट असाइनमेंट पूरी नहीं होगा, इसलिए मेरे को एक्सटेंड करने के लिए खोला, उसने विंडो खोला और उसने 2 दिन के लिए खुला। मुझे सीएनएस का वो देगा क्या, असाइनमेंट 2 का? हाँ करना अपलोड। भेजो, देखो ऐसा बोल रहा है। हाँ भेजना। तो यार मेरे पास वो ढूंढना पड़ेगा, मेरे को मिलेगा। ये तू लिख रहा है, ये तू तन्वी से लिखा रहा है ये? खुद लिख रहा हूँ।
तेरा ऐसा हैंडराइटिंग है? वो मेरा नहीं है, वो मुझे किसी और से भेजा था, अगस्त्य, उसका देखा ना। अगस्त्य का है। वही बोलू, इतना अच्छा हैंडराइटिंग तेरा। इतना अच्छा ही हैंडराइटिंग मेरा। देखेंगे भाई, तेरा देखा नहीं है मैंने। 17 तारीख, ओके असाइनमेंट 1। चल बाय। बाय। जो तुमने पुलिस सीबीआई अबे मैम बोल रही है यस यू कैन डू दैट, बोल रही है गुजरात का। क्या गुजरात का मैसेज आया, यस यू कैन डू दैट बोली। मतलब? मैंने बोला था ना, उसको डाला था मैसेज। क्या मैम इन्फॉर्म दैट देर इज नो सेक्शन बीटेक सेक्शन फॉर साइबर सिक्योरिटी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैन यू क्लैरिफाई और शुड वी सिलेक्ट बीसीए थर्ड ईयर। और उसने बोली यस यू कैन डू दैट। फिर क्या, जा सकते हैं गुजरात। तो क्या भरना। मैं तो अगर तेरा, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज तेरा भरा हुआ। मेरे को तेरा स्क्रीनशॉट भेज पा। अरे मेरे बड़ा कंफर्मेशन आया है तेरे को क्या बोलूं मैं। क्या वही उसका भेजना? अरे उसका नहीं, अंजू मैम ने जो बोला ना किसी के, उसका कुछ भी। हाँ भेजा, देख सेंड किया। देखिए बहुत अच्छा है, वाह। देखना भाई, तुझे क्या बोलूं मैं। तो सीएनएस का क्या भेजा है बे? लैब 1 लैब 2 लैब 3। अभी लिख उन्हें, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर रिस्पांस, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन, सब लिख के वो भेज देना। तू गांड मारा, तू मुझे बोल, तू तेरा स्क्रीनशॉट दे के मुझे अभी भेज, नहीं तो मैं तेरी बात नहीं करूंगा तुझसे। जब तक मुझे भेजता नहीं तब तक बात ही नहीं करूंगा। जा, भेज दिया, देख अब भी भरा मैंने फॉर्म, भेज दिया। योर रिस्पॉन्स इज रिकॉर्डेड। हाँ नहीं, मेल आ गया उसका, मेरे को वो भेज लो। अब भी जस्ट भेजा तेरे तूने बोलने के बाद, वो सेव था मेरा सब। ए हुई क्या? मुझे ये भरोसा क्यों नहीं आ रहा तेरे स्क्रीनशॉट में। चल अभी आ गेमिंग कैफे आ, चल। ए हट, मुझे लिखने दे अभी। रुक रुक, नीचे वाला स्क्रीनशॉट भेज, तूने जो फॉर्म फिल किया है ना, नीचे लिख के देता है। अरे यार पागल है यार। हाँ पागल हूँ मैं, पागल हूँ मैं, पूरा पागल हूँ। नहीं करूंगा। करना। अरे मैंने भरा है, तेरे को बोल रहा हूँ। Yeah, please to inform me that form student क्या क्या क्या? in gift city Gujarat on 21। चल अब मैं जा रहा हूँ, बाय। आ जाए गेमिंग कैफे। ए नहीं बे, वो छोड़ के किसी भी मिला दे। चल बाय। बाय। That solved all my issues. Anyway, okay, let's go like this. I would have liked to have skeletons to activate King Tower, but you can't win them all, and every time I try and activate, I fucking lose. But yeah, old past Ken gave present Ken some good advice, and it works. हेलो, क्या कर रहा है? हाँ आ रहा हूँ। वो मेल पे गुजरात यूनिवर्सिटी का है ना, उसका फॉर्म फिल कर दे।
मैंने और आयन ने दोनों ने कर दिया है। क्या है? वो अपन गुजरात जाने का है, फॉर्म फिल कर दे वो। पैसे देने पड़ेंगे इसके? नहीं शायद। और मैं तुझे मेरा एक ये इस पे इनवाइट कर रहा हूँ रात को, वो AIML का है ना, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट वो करते हैं। मुझे तेरा डिस्कॉर्ड का आईडी डाल, मेरे को तेरा डिस्कॉर्ड का आईडी डाल और वो फॉर्म फिल कर। क्या कोर्स में BCA MCA लिखा है, तो मैं BCA MCA में से कैसे क्या करूँ? किधर किधर? फॉर्म में BCA MCA लिखा है। हाँ मैंने मैम से पूछा, यस यू कैन डू दैट बोली मैम। तो क्या करूँ? सेक्शन का डी? सेक्शन डी लिखा मैंने। कौन से मैम से पूछा हूँ? जिसने वो मेल भेजा है अपने को। एक सेकंड, आयन का कॉल आ रहा है, बोल। तो खेलने तो आ सकते हैं ना? अरे नहीं, मैं रितेश को अभी कॉल करके इसको फॉर्म भरा रहा हूँ, अगर छू देंगे तो तीनों छू देंगे। ठीक है, रुक रुक रुक, बाय। कॉल नहीं उठा रहा रितेश। वो व्हाट्सएप कॉल पे लिया है मैंने उसको, तू आ व्हाट्सएप कॉल पे। हेलो, बोल। देखा क्या तूने? क्या? वही मेल। मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ अभी। फिल कर फिल कर। अलाउड नहीं है, ये छूते हैं, इसको पता नहीं है कि BCA में थर्ड ईयर में ट्रैक होते हैं साइबर सिक्योरिटी उन लोगों के लिए। तेरे को स्क्रीनशॉट भेजूंगा मैम का। हाँ बीच पागल है, इसके तो पागल है। यही बड़वे ने मेरे को भरने बोला है। मुझे कॉल नहीं होगा। तू गांड मारा बड़वे, एक दूसरे पे बस डालते रहते हो। खुद क्रेडिबिलिटी लो थोड़ा सा, ऐसे नहीं करते। कर रहे हैं। ए बड़वे, तू भी भर रहा है आयान, तूने ही बोला है मुझे। मैं वो क्या लेके जाएगा, मैं चल जाऊंगा, पागल है क्या? भाई क्या है? चलो गेमिंग कैफे जाते हैं। चलो बाय, गुड नाइट। I'm going to take my advice more often because, my God, am I just always correct and the best. And every time I check, I don't check X very often. I don't have it on my phone, the Twitter app or whatever. But every time I log on, because I use Twitter to send my thumbnail screenshots to myself, I see some goofy ass tweet from one of my videos, and it always gets tons of likes, and it's always the most foul shit. I can't really explain what it is, but I'll explain what it is right now. Let's see. What did I last see? Anyway, what the fuck's this goofball about to do? Okay, he's going kind of crazy right now. Hold that thought. Okay, I don't know how that happened. Okay, this guy's going a little fucking dicko sicko mode right now, so hopefully the double enchanted troops can go crazy for me here. Let's go for a Goblin Curse Rage, see if we can get a little counter push. And holy fuck, the Queen ability lasts a while, and Goblin Curse is always clutching up. But there's these two Twitter accounts, it's like out of Ken text, where he just puts random like screenshots and videos from my videos, and then there's this other account, it's like just the royal recruits from Clash Royale. And they're always posting like goofy images of me and shit. I don't fucking understand how they get so much engagement. Like, who are these people? Anyway, this is actually a losable match. And I say that because we're losing. Please play a Goblin Gang. If he plays a Goblin Gang, then we are going to be looking good. Okay, wait. Charge onto the Ruin Giant and then Berserky get a ton of damage against the Prince. Oh my god, I just realized. The Berserky has a different animation when it hits the third one with the Ruin Giant enchant. It hits with both knives. Did you see that, chat? Okay, let's go like this.
The evolved Dark Goblin is literally doing God's work. And then let's go like this. And we have to go with this and this. Come on. Please save me, Goblin Curse. Please, just get tons of damage on the tower. Fuck, okay, at least the bandit didn't dash. I don't really know how I'm going to break through this. I've got a minute to plot this shit out. Fuck, in triple elixir, this is not going to be good. Okay, let's go like this. And let's go like this and this. I don't think he has his evolved Mega Knight yet. And then let's go for a rage, try and get as much damage as we can. Come on. Come on, bro. How the fuck am I? Okay, let's go like this in the other lane. Make him spend so much elixir that he can't support his queen. And then let's go for a rage on those enchanted units there. And let's just keep... Oh my god, the fucking Dark Goblin just clutched up. Alright, let's go like this. I thought I fucked up the kite there, but let's go for a Goblin Curse and a rage. Please? Okay, and then let's go for Skellies here. I think the only way I win this is like a... I really don't want to lose this, I'm not going to lie. The only way I win this is a good Goblin Curse Rage. Alright, 20 seconds. I can't afford to stop spamming. Let's go for another one. And then let's go for... Fuck, he's not going to do it, is he? The fucking little rodent's not going to do it because he doesn't need to. No! Oh my god. Please, just delete everything and just take the Tower Goblin Curse. I will literally have sex with your mother for free and within several months we'll be able to pump out a baby. Fuck! That was the game for 15k. And unfortunately, Void Lords Yasin was able to fucking beat it out of me, man. And he's going to throw the good game. Okay, bro. You know what? Good fucking game. Let me read this guy's fucking clan description. Void Lords. Virgin Lords. Let's check them out. Masters of the Void. United we fight, unstoppable we rise. Join us. Forge legends and... Bro, you're doing too much. New defenses, a new spell, and the fancy shop are being added in the Clash of Clans update. Yesterday, I revealed Town Hall 18 itself, and we made room for another building by merging Wizard Towers. Today, I can reveal that as your new defense, the Revenge Tower. This is your signature defense for Town Hall 18. It has unique mechanics, which I'm going to explain, but it will be 430,000 Dark Elixir to build, with a 13-day and 5-second build time. You can upgrade this from level 1 to level 2 with 460,000 Dark Elixir. This is a 2-week upgrade. Ignore the defense video. I'm going to go over it, don't worry. But if you're looking to accelerate your progress at Town Hall 18 and purchase any offers, you can press the C and enter code JUDO to support my channel. You can also do this on the Supercell store, where you can earn extra items for making purchases over there. It's the same price as in-game, you just get those bonuses. Now, the Revenge Tower has an 11-tile range, the same as a mortar, meaning it can outrange the Flame Flinger. It is one of the higher hit point defenses with 6,200. However, its damage per second is 0 to 833. That is because when you first start the attack, it is inactive until 5 buildings are destroyed. So if you can take this out within one of those first 5 buildings, it will do nothing. I'm not sure if base builders will let you do that, and unless there is other buildings, you probably don't want to use lightning spells for it. However, after 5 buildings are destroyed, it will be a slow, single-target defense. Interestingly, at this stage, it deals the most amount of damage per shot, at 500. After 20 buildings are destroyed, though, it gets angrier and stronger, turning into more of a ricochet cannon. So whilst the initial damage is less, 250, it will chain across to deal 150, and due to an increase in attack speed, it means the DPS is increased. After 40 buildings are destroyed, it evolves again, acting much like the multi-gear cannon, being able to target 3 units at the same time. This is where it is then at its maximum damage per second. So it goes without saying that you want to try and take down the Revenge Tower early
in the attack, but I am sure base builders will use this to their advantage and try and bait that area of the base. Moving along to the new spell then, this was teased in yesterday's video, but you can upgrade the spell factory at Town Hall 16, unlocking the totem spell. I am going to break down all of the mechanics of this, however it is a 24 million elixir upgrade with 13 days. You may be using a book of building on the Town Hall itself, however this is equally a good upgrade to use one on. Interestingly, you can upgrade the totem spell to level 2 at Town Hall 16 and then to level 3 at Town Hall 17. However, it is at Town Hall 18 that you can upgrade it to level 4, which is the maximum level for this new spell. Now, you've already had a sneak peek of the stats, but it is a single housing space spell, spawning a totem in the base made of cosmic rock. It has a 0.2 second stun duration, which is essentially when you first deploy it within about 6 tiles, it will stun any of the defenses or defending clan castle troops in that area, and that is so that they will retarget onto the totem rather than your troops that are moving through. So a single target inferno that is beaming down on your archer queen would then shift to the totem. However, you might have noticed during the upgrades that does not change. It is the initial damage when you deploy the totem that increases, but more importantly, the hit points. That is exactly why you would be using this spell. Essentially, wherever you deploy it, it will absorb the fire of any defenses that are covering that range. It's just that the stun and the retargeting of defenses is within that 6 tile range of where you first deploy the totem. At 13,000 hit points though, this is greater than a max level golem. So you're able to just spawn one of those in the middle of the base as well, whenever you want. It will also attract the fire of all defense types, whether they attack ground or air, so you might be absorbing damage that you don't necessarily need to. For example, if you use the totem spell to protect your archer queen from a single inferno, as I mentioned earlier, you wouldn't be taking any damage from the air defense, but when you use the totem, it would. You do have to bear that in mind if you're thinking of using this spell, and don't use it too far ahead of your troops as well, so that you're distracting defenses that wouldn't be in range of your troops. Now, there are a couple of special rules you need to be aware of for the totem spell. It will not trigger any of the defending spell towers. It will also not lure defending clan castle troops or trigger any of the traps. Giant bombs, skeleton traps, nothing like that will be triggered with the totem. You also cannot use an ice block on top of the totem whilst it acts like a troop and has the hit points, so as soon as it loses those hit points, it will go down. You cannot use the ice block spell on top of another spell, so do not try and use that with the totem. With that said, I do think it's a fairly easy spell to use. You don't need precision placement. You can miss a defense altogether with a freeze spell, whereas the totem, it's a little bit more user-friendly. I like that it is a unique mechanic. You can do clever things like distract an air sweeper as well. But don't forget about the other spells. It might be that a freeze spell is better depending on your situation, but it's always nice to have different options in the game, and I think the totem spell will open up different possibilities. If you thought the Revenge Tower and the Super Wizard Tower from yesterday were the only new defenses at Town Hall 18 though, then you are wrong, because a new crafted defense season is starting just after the update. This means the crafted defenses from Town Hall 17 will be removed. When you upgrade to Town Hall 18, you can then build the crafting station once again for free, 0 build time, so that you can then start working on the new seasonal defenses. This season will last for 4 months, so we'll see whether that is now the cycle that they land at. It is important to note that the crafted defense season won't start until shortly after the update, probably a couple of days. However, the 3 defenses, I'll go through them all here, are the Hero Bell, the Bomb Hive, and the Light Beam. Starting with the Hero Bell, this boosts your defending heroes' damage
and hit points. It says it has a range of 50 tiles, but essentially this is the entire base. The 3 modules you can upgrade are the hit points. I would recommend trying to get this to level 5 so the building can't be easily taken out with a giant arrow. But then a boost to your defending hero's damage and a boost to your defending hero's hit points. These 2 I would just upgrade interchangeably, whatever is cheapest. But just note that these damage boosts will stack on top of any modifiers such as in Legend League. In that setting, for example, the defending hero's damage and health are already boosted by 20%. So then you would have, at the maximum level for the Hero Bell, the 35% on top of that. This can make them extremely challenging on defense, but as soon as the Hero Bell building is taken down, then those boosts would not apply to any remaining heroes on the base. The second crafted defense you could choose from is the Bomb Hive. This acts similar to the Flame Spinner from the previous crafted defense season, how it will just fire the bombs no matter what, and the range goes up to 20 tiles at maximum level. Because it will fire these even if there's no troops in range, or if there's no troops visible, this means that Royal Champion charges could be a nightmare versus this defense. Whilst you might want to also consider getting the hit point module up to level 5, so it can't be taken out with a giant arrow, you really do want to have the damage and the tiles maximized as fast as possible for this, if you are wanting to try and defend versus Royal Champion charges. So I feel like this will be a really good all-round defense when it comes to this crafted season. However, the final one is the Light Beam. This defense, you would only have to upgrade the hit point module to level 4 so that it couldn't be taken out from a giant arrow. And then from there, you have the damage per hit module and the attack cooldown. Essentially how this one works is it has a 15 tile range, so it can fire at troops from a long distance. But the greater it has to fire, the less damage it will do. So at the 15 tiles, it will only deal the lower end of this margin, 240, right up to 800 the closer the troop gets to the defense. Now you might have noticed as I was upgrading some of those modules that I was gaining a new currency. These are Sparky Stones, which you can spend in the new Fancy Shop. This was the point system and unique cosmetic that they announced, which I covered that information on my second channel, Judo Sloth 2. But any previous crafted defense upgrades or superchargers, even from back when the superchargers were at Town Hall 16, you will retrospectively gain points from, and obviously any that you do in the future, such as with this new crafted defense season. You will gain 8 Sparky Stones for each crafted defense upgrade and 10 Sparky Stones for each supercharge. There are some unique rewards, such as the crafted statue for 500 Sparky Stones, or what I will be going for first is the Meteorite Builder Skin, 3,200 Sparky Stones, but the aim of adding the Fancy Shop is so that the Clash of Clans team can provide a permanent reward for temporary content. Once you purchase the skin, all of your builders will turn into Meteorite builders, and you can easily switch this back to the default should you wish by changing the skin from the builder's hut itself. Within the Fancy Shop, you might have also noticed the charge effect. This can be purchased multiple times in order to apply the supercharge effect to any of your decorations. At the moment, once you apply this, you cannot remove it. However, their wording implies that they will be looking to add that feature in the future. As part of this update, there is also some improvements to ranked mode. Firstly, event troops are no longer able to be taken into ranked attacks, which is great. The League Decay has been made more clear in the UI. This is where you would be automatically demoted if you were inactive for more than a week. You will also get a demotion alert message prompting you that you need to sign up before the start of the next
tournament to avoid demotion. This is great, but I do hope they continue to observe it in case they need to make more adjustments with it. The matchmaking in a weekly tournament is now less predictable. The amount of players that can be promoted or demoted in certain leagues has been adjusted, and there has also been some general improvements to the game as well. I will bring you some Town Hall 18 strategies at maximum level tomorrow. If you missed Sneak Peek 1 though, where we revealed Town Hall 18, the Guardians and the Super Wizard Tower, I will place that on your screen. Enjoy the rest of your day. These are all of the blueprints I've found so far, and I've sold countless spares. So where did I find them all? Well, instead of thinking about specific locations on the map, think about specific container types. Whilst almost any container has a chance for a blueprint, some containers have higher chances. So knowing what containers to loot will really help you know what to focus on. Let's go through some of the containers that have worked for me, and then some loot routes that have increased my luck for finding lots of blueprints. I'll also showcase the specific containers that seem to have a higher chance for specific blueprints. Now, before I continue, doing night raids, looting breachable rooms, or key rooms seems to increase the chance for blueprints as well. Firstly, these rusted boxes, I thought they would only have scrap in and aren't worth looting. But I have found blueprints in here and also weapons and a bunch of other useful stuff. So definitely pry these open and take a look inside. You might be surprised at what you'll find. Another really important place to loot or specific container is these black boxes on Bluegate. Honestly, they are all over the place in the underground of Bluegate, but you can also find these all over the place in Bluegate, all over the overworld, so to speak. So you don't have to just go in a specific loop. Keep an eye out for these things. I've had some good chance finding blueprints in here. The next place that I found a lot of blueprints are the weapon boxes, the green weapon caches, and these can spawn all over the place. On top of that, we've got these ammo boxes. I thought there'd only be ammo in here, but I've also found blueprints inside ammo boxes. So keep a good lookout for these as well. If you're able to get the security breach skill yet, and I highly recommend doing so, all of these security breach lockers do have some blueprints inside as well, so you'll be able to get them there. Another really reliable place to get blueprints is uncovered raider caches. So these can spawn at any time, you've just got to listen out for that ticking noise, but you can find a bunch more during the specific Raider Uncovered Caches map event. I've also found countless blueprints just in residential type loot areas. For some reason, I've had the best luck with finding grenade and attachment blueprints in these areas. Now take this next part with a pinch of salt because I don't have enough data to definitely confirm it, but from my own anecdotal experience, it feels like certain containers have a specific set of blueprints that can drop, which may explain why some people can struggle to find the anvil, whilst others struggle to find the wolf pack. For example, I've only ever found the wolf pack blueprint in residential areas, specifically on the Buried City map. But I found it a lot. Like, I kept selling this early on, and I've come across it multiple times, looting the same container type. So bearing in mind that this is anecdotal and there needs to be more testing and it might not be completely accurate, here's a look at some of the blueprints I consistently find through different container types. Starting with the ammo box, I found a lot of weapon blueprints in here, specifically the anvil blueprint. The Raider Cache is another place where I found weapon blueprints. I'd love to get some community input here. Who has found blueprints in a Raider Cache and what have they been? I'd love to get your input. I have a feeling there might be all sorts in here, but I haven't looted enough myself to be for sure. For rusted boxes that you have to breach, I have found grenade blueprints. Specifically, the Showstopper blueprint keeps popping up for some reason, but if I remember correctly, I have seen other grenade blueprints in here, but that might have just been a lucky chance. For Bluegate boxes, I've found all sorts of blueprints. However, the one thing that stood out to me the most was the augments. I think I found all of my augments on Bluegate specifically. I can't remember exactly if they were all from these boxes, but I have not found any other augments on maps outside of Bluegate. Once again, this could just be anecdotal, but it's quite interesting. Red lockers, I found all sorts. Although it usually ends up being weapon and attachment blueprints, I feel like the red lockers have a very wide range of potential loot items, so that might be why.
For weapon cases, I've only ever found weapon blueprints. I keep seeing the Toronte, which is something that I don't see as often in other places. Like the kind of places where you keep seeing the Bettina and the Anvil and even the Osprey. I don't get the Toronte as often. The security breach locker, I have found a bunch of weapon blueprints in here, and also, more specifically, gun parts blueprints. This is the only place I've personally found gun parts blueprints. And then, of course, residential loot. I've highlighted the fact that I found a lot of attachment and grenade, specifically the Wolfpack blueprints. This has been my experience, mostly focused on looting on Buried City. Now, with all of this information in mind, it's all very anecdotal, and I'd love to get some community input. So in the comments, tell me where you last got your latest blueprint, what particular container it was from, and what map as well. It'll be interesting to know. Maybe we can kind of gather together and figure this one out. Now, I've set together 2 loot routes that I think cover some of the most likely spawns for the blueprints, considering my own personal experience finding them. I personally think Bluegate and Buried City are just the best maps for this. I didn't have much luck finding blueprints on the dam. In Spaceport, I need more experience to figure that one out, so give me time on that one. Now, before I show a few different loot routes you can follow to increase your chances of getting these blueprints with a bunch of containers to loot, another great place to get blueprints is the trials. Each star rating you get for completing a trial will give you a reward. It's a random item, but it can include a blueprint, and it has for me multiple times. Fortunately, you can get duplicate blueprints through this, which is a shame, but if you complete your trials each week, the chance of you getting a bunch of blueprints really goes up. Right, let's talk about these loot routes then. You can try this out for yourself, and hopefully none of these get too over-congested. So for the Buried City blueprint run, you're going to want to start with the red tower. You can climb up the top, and there will be a raider bag here most of the time. It does have a chance to spawn, and inside there you can usually find a variety of crafting materials and, of course, the chance for blueprints. In this case, we find a Bettina blueprint, which goes to show blueprints do spawn here, but it's the good old Bettina. But don't worry, there's many more places to find. Next, you want to drop down here, and you'll now have this nice room to loot with a bunch of searchable containers. Search everything. Basically, every container you open has a chance for a blueprint. These red lockers in particular have always been very kind to me, and I think the same can be said for most players, so definitely give a lot of attention to these. You'll also find a security locker down here as well, so if you need security breach, or if you have the security breach rather, this will just add extra value to your loot run, and of course, you will have the chance of finding blueprints in here. Now, what I found personally is these are the kind of places you're going to find a lot of weapon blueprints, and not specifically like attachment and grenade blueprints from my experience, and I'll show you where we can go now to do that. But first, just a quick reminder that this red tower does have some extra loot spots down here, sometimes a weapon case and 2 more searchable containers here. Now, I've honestly had the most luck finding grenade blueprints from the residential area buildings, specifically ones behind locked doors or breachable doors. And I'll show you the route to get to that now. It's, of course, the Plaza Rosa building. Yes, the good old pharmacy. But this is technically behind a breachable door. So you want to go into here at nighttime specifically. But this one ends up being a really nice place to loot because there's just so many containers in here. And it's got that added value that it's behind a locked door. And you'll see in a minute how we get a Wolfpack blueprint from here. Now, I've ran this hundreds of times, and I've probably found 3 or 4 Wolfpack blueprints in here, so I can confirm that I found Wolfpack blueprints in this building, but nowhere else. So keep that in mind. I have a strong suspicion that certain blueprints spawn in certain container types. For example, grenade blueprints may be in residential areas, whereas weapon blueprints are more likely to be in weapon cases. Right, here's a good loot route for finding blueprints on the Bluegate map. Obviously, one of the best places is underground in reinforced reception. You don't have to go down there. Sometimes there can be ammo boxes in here in this little spot, so if you do get this starting side, this is a good route to kind of make your way through. What we want to do is mark this area on the map up here, so we're coming up through this way. And as we go, I'll point out some important sort of points of interest that are worth checking over. So the first thing is, when you get to about this point on the map here, you'll find your first lootable box. Unfortunately,
it's not there, but there's another one here as well where you find like a raider's body right here on the map. So this is another one of these blueprint boxes I want to keep an eye out for. And then as you run out through this way, you'll find more of these lootable raider caches here too. All right, now we keep up going this way, up through this route up here. The next waypoint being this point here. You'll find one raider cache here. I don't know what to call these, raider bags. They're worth looting. Once you get to this point again, there'll be another box here. But once again, these don't always spawn these ones, so it's just kind of about chance. But we came across a few. Now we go underground here and come in through this way. We're now underground in this area here. We're going to start looting these lockers. And this will take us up through here. A couple more lockers here. This video is brought to you by ZocDoc, Loud Evil and Quiet Evil. When Loud Evil is threatened, it reacts like this. Quiet Evil reacts like this. Take your Jedi weapon. I am unarmed. Strike me down with it. Loud Evil will do anything to escape capture. Quiet Evil gets threatened with rotting away in a dungeon for years, for decades. Patience is a product of age, both of which I possess in abundance. Loud Evil shouts at you and screams at you. Quiet Evil whispers in your ear. See, he wants it for himself. Loud Evil is powerful, Quiet Evil is weak and celebrates your power. Good. Your hate has made you powerful. Incredible. What I wouldn't give to glimpse the world through your eyes. To know what you know. Here is the situation. Sometimes you can write a villain that is strong and scary and has every evil trait on the evil trait list, and it works and it's intimidating and it's tough and it's domineering and it's everything we want in a villain. And sometimes you make a villain menacing and strong and full of evil, scary feelings, and it's Kylo Ren throwing a tantrum or Thunder doing this. I don't think he's gonna stop. Sometimes strength and hatred and anger and power and aggression just don't cut it. It doesn't come across right, or it doesn't fit your story, or it doesn't tell the story you want. Whatever it is, it just doesn't work. And in that case, there's something else you can do with your villains. And this can either be a direction you take an existing villain, or it can be an entire villain archetype on its own. I'm going to talk about the archetype in this video, but it's really just another avenue of evil that almost any antagonist can explore. And I'm calling this Quiet Evil. And the three main examples we're going to deal with are Palpatine from Star Wars, Singe from Arcane, and Gollum/Smeagol from Lord of the Rings. And one of the reasons why these characters are such great examples is because they have counterparts in their stories who largely do partake of the loud evil archetype. And I'm talking about Darth Vader, and Bessa Medarda, and Sauron Torrent. All three of these are great in their antagonistic roles. They are terrifying, they are tough, they are strong, so tough and strong that it feels like the threat they represent is insurmountable, inevitable, invincible. Who could possibly defeat them? But we need to defeat them because what they stand for, the cause they fight for, is abhorrent to us. So in light of that, it's really, really odd looking at a character like Singed, who is terrifying, or maybe terrifying is not the right word. He's unsettling, but he's not tough at all. He's not strong at all. He himself does not pose a threat for much of the story, and I'm saying that on a character-to-character basis. I'm also saying that on a plot level, he's doing something entirely separate from the plot, all on his own. It has no direct connection to anything else going on in the story, and maybe there would have been reason to fight him and take him out earlier, but now at this point in the story, there is no reason to fight him. The part he played in the conflict is done. It's out of his hands, and what he stands for, well, it's not like entirely abhorrent. It's actually kind of intriguing. That is what is at the heart of Quiet Evil. There are some pretty horrifying things a traditionally evil character can say to you. They can threaten you, they can shock you with their extreme lack of morals, their evil designs and intentions. They can say just the most straight up weirdo, creepy shit. I can see your soul at the edges of your eyes. But the idea Quiet Evil is based on is that the most terrifying thing an evil character can
जो नंबर आणि केलेला आहे तो अवैध आहे. आपण जो जो
say to you is something that, to your horror, you realize you agree with. Loud evil opposes you and everything you are. It stands in your way. It threatens to destroy you. Quiet evil scares you at first. It certainly seems like it opposes you and stands in your way, etc. But it doesn't pose a threat to you. It might even refuse to do so. There might be some frustrating reasons to keep it alive. And meanwhile, it talks to you innocently at first. And this whole time, you know where you stand, and it's firmly on the side of good. And this person is not good, but the things that they're saying... She's dying. I'm attempting to prevent that. How can you really disagree with that? Can I help? And it's really, truly unsettling when they say what they want, and it just so happens to be that that's exactly what you want. Take your weapon. Strike me down with all of your hatred. But, I mean, they're one of the bad guys, right? So why am I hanging on their every word? Why do I want to do exactly what they say? Loud evil threatens you externally. Quiet evil threatens you internally. It makes you afraid of what you're becoming. And that's due to the story itself, the events of the journey so far. When you went into this plot, when you left Tatooine, when you got a job at the academy, at that point you know exactly what kind of person you are. And you like that version of yourself, or maybe the version of yourself after you developed a little bit, and you had no plans to change that. But then along came a little thing called the story, and it put all kinds of pressure on you that you weren't used to, and it hurt you, and it confused you, and it traumatized you, and it took stuff away from you, it took people away from you, and it left you lost and desperate, because you thought what you were was good, or good enough at least, good enough to win the plot, and now the story is telling you really harshly, no, you're not good enough. You cannot stop the thing you need to stop. You can't do what the plot demands of you, not in the way you wanted at least. Or maybe things just got more complicated, and you wouldn't entertain the possibility of change before, but the situation is different now. It's dire. And you have to look at all the options, even the ones the old you had dismissed. And now there's this guy offering you an option, and it's one that somehow sounds like it's better than anything you've heard so far. And you used to see this person as a bad guy, but so much has changed since then. You've changed. You've actually changed so much that you don't entirely trust that old you. You don't trust the you who made that bad guy evaluation in the first place. And in fact, maybe the only reason why you couldn't solve your problem earlier was because that naive old you prejudice was standing in the way of seeing what you clearly needed to do. Loud evil makes progress towards plot goals feel impossibly hard. Quiet evil makes progress towards plot goals seem impossibly easy. Just give in. It's right here. Just take it. In fact, you could even say it like this. Loud evil is an antagonist. It stands against us. Quiet evil is an ally. It's an evil ally, and maybe they're just acting like an ally, but functionally, at this odd, desperate, maybe singular point in the story, they are on your side. Their interests, their goals are allied with yours. And because of that, we take so many of the villain characteristics and literally reverse them. What do we normally do when we want a character to be seen as an ally? We make them non-threatening to you. I am defenseless. We make them sympathetic. We give them ways of relating to our main characters. We can be loners together. We'll also give them ways of helping our protagonists. You know the way to Mordor. And we make them deeply aligned on some level, an unexpected level, with our main characters. Why? Why do all this? Why does anyone commit acts others deem unspeakable? For love. What the aim is here is for us to have a shallow assessment of this character as untrustworthy and wicked and other. They probably look like a bad guy. Maybe we see them do things that look really bad at first glance, and they just seem nothing like us. But at some point, maybe once they say something we agree with, we think, what were the reasons to not listen to this person again? What reason is there to not strike down Emperor Palpatine? What reason is there to not take Shimmer? Why exactly did I decide not to trust this guy again? Because maybe in the past he did things that looked bad, but when I look at them again now that I've changed, I gotta admit, I understand now. And before we know it, the unthinkable is happening. We are starting to transform before our very eyes. Once we give in to what we know we shouldn't have given into, we see ourselves becoming evil. Before we can stop ourselves, we do something we regret, and it's gut-wrenching for the audience. Because we had fully identified with the main character at the start of all this, and then we have to watch them start down this fateful road towards this outcome, and watching their story unfold and being unable to stop it is kind of exactly
exactly how it feels for them, watching them unable to stop themselves from becoming this thing that they became. And maybe, usually, there's another antagonist here, and that's the one we're trying to defeat. Maybe we're doing this whole thing to try and defeat them. But what Quiet Evil highlights is that if in the process of defeating that evil, we become that evil, how is that any different from failing in the first place? If we're the new evil, then we've lost just as badly. And even if we don't feel afraid of these quiet villains per se, the realization we're in danger of becoming them hits a much deeper fear. It's a fundamentally different kind of dread that shakes us to our core. Okay, so if we're really going to understand how to write this well, we need to talk about some variations that are already kind of coming into focus in discussing these different examples. And do you know what else has a bunch of different variations? The ad segues in my videos. Every single one of them is, wow, it's so different. Okay, ad time. Hi, so as many of you know if you've watched my channel for a while, I live a very even score same day doctor today. Quite different from Gollum, who is very different from Palpatine, especially in this manner being presented with ally qualities, or maybe it's more accurate to say as lacking crucial antagonist qualities. All three are presented as physically not very threatening in some prominent way. With Singe, that's valid, it's true. At no point does he pose any threat of actual bodily harm to us. With Palpatine, it's more of an outright lie. He looks weak, but he can shoot lightning out of his fingers, so he is extremely physically threatening. Gollum, it's a mix. By human standards, he seems pretty weak, and that is true, but by Hobbit standards, he's an even match. And we kind of forget that until we see him fighting and remember that Frodo and Sam are also pretty weak. And that's kind of all that matters in terms of the threat that this villain poses. And what we do see with all these characters is that the external threats that they do pose, those are never active when they're in quiet evil mode. When they are whispering to us and influencing us and corrupting us, that's when they seem physically weakest. And then once the story kind of allows us to acknowledge that no, these are enemies, then the external threat they pose measures up more to the internal threats they pose, almost like an acknowledgement or a reflection of it. Another area where we see differences between these three examples is with trustworthiness. Singe stays at the same level of ambiguous trustworthiness throughout the whole story, and when characters are listening to him, it's not because they trust him, it's because they respect his intelligence. And then Palpatine is at no point truly trustworthy or sympathetic at all. And it's also not like Singe. We don't see him as an intellectual authority, we don't see him as wise particularly, but the way it works with him is that in the moment, it's terrifying that so much of what he says sounds like stuff that we agree with. He just keeps saying these things we want to hear, mixed with things that we don't want to hear. It strikes me down in one breath and then dark side stuff in the next breath. So circumstantially, we end up agreeing with too much for us to feel comfortable about it, and that scares us. And then Gollum is granted a legitimate reason to start being trusted again. We see that with the revival of Smeagol, and we wonder if that's going to win out, even though it kind of gets corrupted at some point. But with Gollum, we also understand why Frodo starts being more sympathetic to him, and that has to do with another difference, which is identification. All three of these antagonists are designed to feel like the other in some way, but actually it's mostly in the same prominent way through their disturbing physical appearance. But that starting point leads to three different paths for these three characters. Gollum feels nothing like us at first, and then that identification grows, both from his side and from Frodo's side as he becomes more like Gollum, and as we sympathize more with Frodo, we sympathize more with Gollum, so we start to see him as more relatable and identifiable also. And then Singe is just a creepy old scientist guy, and we don't feel any relatability there. But then once Piltover is kind of kicking us to the side of the road to die, like the worthless undercity trash that we are, once our life's work gets scary enough to horrify our friends, we realize that those differences were superficial, but more importantly, we don't identify with him directly. We see a different character that we did trust in him. It's why I parted ways with Heimerdinger. And we kind of have this transference of trust and authority onto him, which is a really unique thing they do with the mentor role here. And then Palpatine is also fascinating in a similar way. He is intended to always be firmly other. There's never any identification with him, but there is supposed to be identification with Vader. Vader is very much like us, and as much as that is meant to horrify us at a certain point in the story, the whole challenge of the Star Wars story is to engage with that discomfort and make peace with it. And then instead of the identification acting as a warning signal that we're going down the wrong path and becoming like the villain, the resolution is that the identification causes the villain to go down the good path and become like us. And what we became in this situation is kind of the quiet good. So the whole thing is turned on its head. It's brilliant. And on the topic of Vader, I think when you see a lot of times with this type of antagonist, like I mentioned previously, is a second antagonist or multiple antagonists. And that way we can have our louder villains too. We can have Vader there to threaten us and fight us. We can have hordes of orcs to go to war with. We can have Sokol making the plot an intense, complex political drama. And the way that louder evil interacts
is that as we're fighting that, that's what pushes us to become what we don't want to become, what we dread becoming. But then it's worth discussing too at this point that there's a lot of fluidity within villains as well. Like we said before, the quiet and loud thing can be general archetypes, or they can be modes antagonists move into at certain parts of the story, or represent in different aspects. Singe is a quiet villain and operates that way for a lot of the story, but then with Warwick he takes on more of a plot antagonist role, and similarly when he teams up with Mbessa and Kate and Victor. To use another Arcane villain example, Suko is a loud antagonist when it comes to the Piltover Zahn plot, but then he takes on more of a quiet evil role when it comes to Jinx. And just on a side note with regard to Arcane specifically, you can see how quiet evil plays such an effective role in stories that are about grey morality and have a lot of grey characters, stories that question morality instead of giving a black and white answer. But moving on, Palpatine is practically the leader of the Empire, so he is responsible for all the loud plot stuff, but then in this specific situation, at the climax with Luke and with Vader here as a prop, at that distinct point he slips into quiet evil mode. Sauron is very similar. He's the one who's technically at the head of these wars, he's the one who's sending out the hordes and the ring race, etc. But then, through the ring specifically, he is the quiet evil. And totally different example, Voldemort is mostly loud, but every so often we see him taking quieter avenues, like with Tom Riddle's diary, or in this scene in the 5th movie where he's specifically susceptible to the internal corruption of quiet evil. She deserves it. You know the spell, Harry. Do it! So in conclusion, to sum up, what I love about these villains so much, and specifically this kind of quiet evil, I know when people hear the term, they probably think about like mastermind characters, and that's its own kind of quiet evil, separate discussion. But this type of quiet evil, these paragons of corruption, truly bring a new kind of depth to the stories they're in. It's a multi-dimensionality of the character's journey that as we get closer to defeating evil in a plot sense, we get closer to being defeated by evil in a character sense, losing to evil by becoming evil, because we can't just care about what we do, we also have to care about what we are. And after encountering these villains and doing things we regret and changing ways we don't want to, what all this pushes us to do is to turn away from them and to find a virtuous way to win the plot instead. Okay, we will stop here. Subscribe this coming Sunday, November 23rd at noon Pacific time. I'm going to be doing a live stream celebrating the 4th anniversary. This is not a video on how to write extremist propaganda. I want to be very, very clear about the function of this video. It's not a how-to writing instruction video. If anything, it's a how-to on the media consumption side of things. This is how to protect yourself from the most dangerous genre of media, propaganda. So let's get into the story of the fascist propaganda movie that flew so under the radar that it got nominated for an Oscar in 2003, and how that happened in this video, which is brought to you by Squarespace. And really what I want to understand, the politics is not the point here. There's not a video about politics, it's about avoiding politics, if anything. And I'm going to throw up a bunch of disclaimers on screen right now that you can read if you want, explaining more what are and are not my intentions for this video. But anyway, my real question here is how can a story ingratiate someone towards an ideology that consciously they hate? How does that happen? How do you have a person go into a movie with a clear head about all of their values and morals, and then come goose-stepping out of the theater, basically? We storytelling YouTubers are always kind of preaching the gospel of how amazing stories are and all the good that they do. Reality is that it's a tool like anything else. It's a very, very powerful tool, and it can do terrible things, but not if a viewer goes in prepared with a full understanding of the underhanded emotional manipulations that these stories use. So what we're going to do is we're going to disinfect some of the most sinister media out there by shining a light on these tactics, and hopefully we will make the world a better place. So there are two types of propaganda. One is very easy to protect yourself from. You don't need any guidance with regard to that category, and that's propaganda directed at already loyal believers. It's for insiders. And this is the super preachy, super patriotic, or super religious, over-dramatic, cringes slop that you can spot a mile away. And it's mostly created to strengthen the passion of the casual believer and to give existing zealots material to indulge with, its ideology, basically. But the other category of propaganda is significantly less easy to even recognize. And that's propaganda that's made for non-believers, for skeptics, for outsiders. And the intention here is not to fully convince them, but to break down their emotional barriers to the ideology, sometimes so subtly that they don't even realize it, and to make the extreme stuff feel more palatable, relatable, and less spooky. And I'm going to use as my example in this video the most well-crafted example of the second type of propaganda that I have ever seen, bar none. The movie is called Hero. It came out in 2002, stars Jet Li, Zhang Ziyi. It was a huge blockbuster both in China and the US. It was actually the first Chinese movie to ever top the US box office. It is still the 6th highest grossing foreign movie ever in the United States. Like I mentioned before, it was also nominated for an Oscar, generally received huge accolades and
amazing reviews, except for a few that were like, guys, wait, what the f? This is fascist propaganda? But anyway, and granted, some of you are probably watching this like, wait, I remember that movie. What do you mean propaganda? I saw it, I remember thinking it was a good movie, I don't remember any creepy whatever, and that is fine, we will talk about that exactly, but I'm sure the majority of you have probably never heard of this movie at all, and that's also okay. I'm going to be providing all the relevant context you need as we talk about the 10 tactics we're going to discuss, but also I will give a concise synopsis up front just to center you in what we're dealing with here. The story here takes place over 2,000 years ago. China at this time is a bunch of warring states, and the first Qin emperor was out to conquer all of them. He was trying to make a unified China for the first time ever. And spoiler, he eventually does do this historically. He builds the Great Wall, or part of it, but it was through this really, really bloody military campaign. And the movie intro tells us that because of that bloody campaign, there have been several high-profile assassination attempts on this king, specifically from 3 infamous assassins. And our story begins with the news that this random, no-name backwater policeman has single-handedly taken out all 3 of these assassins with his insane sword skills. And when I say no name, by the way, I mean that literally. I was orphaned at a young age and was never given a name. People simply called me Nameless. So Nameless arrives in the capital to receive his reward, and he begins to tell the story of how he accomplished this unbelievably heroic feat. And as he goes on, something isn't lining up. Something is off. The king is suspicious of the story, and he realizes something. Among the rewards for killing these assassins was the honor of drinking in the presence of the king, which was impossible beforehand because of all the assassins. And also, this Nameless swordsman guy, from the stories he's telling, seems to have perfected this killing technique with his sword that is impossible to defend against at 10 paces, which is exactly how far Nameless is from the king right now. Putting all this together, the king realizes what the plan has been all along. This Nameless warrior himself is an assassin, the most deadly assassin of them all, and he intends to kill the king in this meeting immediately. And yet, he hesitates. Why? So, while Nameless was putting together this insanely ambitious assassination plan, something unexpected happened. One of the other assassins, Broken Sword, swore that as long as he lives, he is going to prevent Nameless from killing the Emperor by any means necessary. Yes, this guy had devoted so much of his life to killing this Emperor, but something had changed and he was not that man any longer. And struggling back and forth with Broken Sword, Nameless himself begins to have a change of heart. Broken Sword gives him, quote, a gift of 2 words, which leads to an epiphany for Nameless. He finally understands the true aim of this bloody warlord who sits on the throne in front of him, who has laid waste to whole kingdoms, who has killed Nameless's own family. The grand vision here is, quote, our land, peace for all, which can only be achieved through absolute unity, through eradication of all these pesky, squabbling kingdoms and all their different languages. If everyone is united, if they all belong to one unified state, there will be peace and prosperity for all. So in the final moment, when it's all on the line, Nameless makes his decision. Your Majesty, my task is completed now. My decision will cause the deaths of many, and your Majesty will live on. He decides not to kill the Emperor because of the great vision of our land that he cannot bring himself to deny. And he dies a hero for having made this fateful choice to prioritize our land above his own petty vengeance. So that is the story in a nutshell. You can see the fascist or autocratic messaging I'm talking about. The only answer to all this chaos is for the whole state to unite under one powerful leader who quells the chaos with violence, but it's only because he cares so deeply about peace. So all the individuals must put aside their petty grievances for the sake of the greater good of the big powerful state and his big powerful king and our land, our soil, and the paradise utopia which is coming in the future because of it. And again, I know this is going to be a sticking point for people with this video. If you want to get into the political conversation about what this is, the most accurate terminology, the history, I know I don't care, I'm not a politician, I'm not a historian, not anything, let's move on, I don't care, let's talk about storytelling. Okay. Okay, I want to talk about 10 tactics that this movie uses to make its message palatable to viewers who walk in not having fascist beliefs, never having had a fascist thought in their lives. And just to be clear, we're using this specific example with this specific ideology, but these tactics could be used just as easily for the opposite ideology, or a religious ideology, or flat earth, or lizard people conspiracies, or happy abbeys, or anything. Any point A to point Z ideological shift that requires deception and manipulation to achieve, you're going to see the most effective propaganda out there employing these exact kinds of tactics.
tactics. So tactic number one, the propaganda message of this media doesn't arrive until the last act. The fascinating thing about this movie at first glance, this movie which is explicitly fascist in its messaging, is that maybe 90% of it is explicitly anti-fascist in its messaging, and yet that doesn't prevent 100% of it from eventually being ideologically fascist by the end, because that last decision of the main character switches the entire movie to supporting those ideals. But if you, young, innocent viewer with your good and virtuous Western values of freedom and individualism and democracy, sat down and watched the first 2/3 of this movie, you would not see anything concerning about its messaging at all. And the way this works is really, really intuitive. If you're writing a story to persuade a skeptic, an outsider, and you make the protagonist have the belief that the audience skeptic person is skeptical of, if you make a religious propaganda movie for atheists and the main character is a Bible-thumping missionary, the skeptic is going to turn off immediately, obviously. But if the movie is for atheists and you make the protagonist an atheist, make them someone who scoffs at believers and has sound logical arguments against the existence of God, and you give us this whole movie about them fighting for secularism and atheism, and then make them only find God at the very end, then you are not addressing yourself to a closed-off skeptic audience person. You are talking to a totally open skeptic who has to actively close themselves off if they want to resist its messaging, and that is a much easier sell. Hero is about a character who's going to put an end to years and years of chaos and bloodshed by killing this emperor. Most of the movie is about him being steps away from ending this fascist regime, and over the course of the story, he undergoes a complete ideological transformation. बोलना अरे मैं खेल रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ लिखने तो दे भाई अरे कल देना है ना भाई नहीं अभी 12 बजे देना है देखा मैंने अरे कल तो जा भाई मैंने देखा है मैं तो मेरा हर तीसरा ये रुक जाएगा मैं अभी करके भी कर रहा हूँ देखो 3 पेज लिखने में कितना टाइम लग रहा है कब से लिख रहा है अब भी लिखना चालू किया 5 मिनट में हो जाएगा चल 5-10 मिनट में हाँ हो जाएगा गेम चालू करके एक ये लगा डेथ मैच वगैरह खेल आता हूँ हाँ He changes his mind at the end and doesn't kill the king. And by that point, we, the audience, have identified with him. We've empathized with him. We've grown to admire him. We think he's super cool. And he's also super smart to have honed this perfect technique and made this whole elaborate plan. And we're rooting for him. We are fully behind him. We are already thinking of him as the hero, partially because the movie is called Hero. And we assume he's a hero for completing the mission of killing this bloody dictator, not changing his mind about it and backing out. But nope. Apparently, the real reason he's a hero is for doing the opposite of what we first characterize as heroic. But wait, that doesn't make any sense. How can the audience just go along with this? And that's tactic number 2. The media doesn't demand change, it encourages growth. Hero does this super sneaky thing with this messaging. First up is it sets up this whole framework. There's a huge part of the movie. This idea that calligraphy is heavily related to swordplay. And that sounds innocuous, but there's a lot of subtext here. Calligraphy is writing. Writing is ideas. The stronger you are in ideas, the stronger you are as a swordsman. Step number 2, who is the strongest swordsman? Well, nameless, of course. We spend the whole first half of the movie having that demonstrated to us again and again and again, and then he turns around and says something that surprises us. Broken Sword, that other assassin, that guy is my equal in swordplay. And in fact, if being great all the way able to kill the Emperor, Broken Sword actually succeeded in his plan to do that, basically. I mean, he got all the way there, but then mysteriously he just cut him on the neck. He didn't actually go through with it. Curious. So how is that event characterized by the story? Step number 3, Broken Sword tells us that he made his assassination attempt when? At this point in time when he had reached the pinnacle of his abilities as a swordsman, which as we know means the pinnacle of his prowess as a calligrapher, aka this is the pinnacle of his ideas. And what we see is before he reached that enlightenment point, he wanted to kill the Emperor, and afterwards he didn't want to kill the Emperor. So he didn't change course. The natural end of his growth process was to decide against killing. And all of this is summed up in this curious motif of Broken Sword's calligraphy scroll, which reportedly carries the secrets of his swordplay, which once again means the secrets of his enlightenment. And the way this plays out is that right before the climactic decision of the main character, the Emperor declares that he has found the true meaning of this calligraphy before him. Listen to this. In the first stage, man and sword become interchangeable. Here, even the blade of grass can be used as a lethal weapon. In the next stage, the sword resides not in the hand, but in the heart. Even without a weapon, the warrior can slay his enemy from 100 paces. But the ultimate ideal is when the sword disappears altogether.
The warrior embraces all that is around him. The desire to kill is gone. Only peace remains. So the highest level of swordplay is no sword. And it's the lower levels, which are necessary, which are part of this whole thing, those are the violent ones. But then after that is when you achieve this non-violent stage. It's not change, it's growth. You hear that, skeptic person in the audience? This is not an I told you so. This is not saying you should have been this opposite way all along. No, you just weren't there yet, you poor thing. Just like that cool main character you identify with, if you continue on your natural course, if you don't deviate from your course, but just take the next step, it's agreement with this even cooler guy with broken sword. And not even him, actually. It's agreement with this new level of your own position. Tactics number 3 and 4, implicit in all this. 3, the story glorifies the other side, and 4, it never undermines any of that. In other words, for a story that does promote authoritarianism, it spends a whole lot of the movie glorifying the anti-authoritarian cause. It sympathizes heavily with its struggles, it shows the heroic efforts of that side, and it does not contradict that. It paints it in a truly empowering heroic light, and it keeps that sacred. And then when the protagonist switch happens, it never goes back and disavows that glorification. By the end, we still think of those efforts as heroic, but the authoritarian climax is just more heroic. We still think of the struggles as sympathetic. That pain is real. Just the authoritarian solution is a more mature remedy to that pain. That's the way the story paints it. So basically, the way the story wants you to feel walking away from it is that what you are right now is already a hero, but you could be an even bigger hero if you ascend to that higher ideological plane of this extremist ideology. In a similar vein, tactic number 5, the story does not demand a change in core values, just a change in the ideological endpoint of those core values. Or maybe you'd say a change in the means of bringing about those values. In other words, it's not saying you thought violence bad, but really violence good, or you thought objective good and evil, but really might makes right. No, listen to this. One person's pain is as nothing when compared to the suffering of all. The war between our kingdoms is as nothing if ending it leads to peace for all. If you really truly cared about the suffering you're experiencing and wanted that gone from the world, then the logical conclusion is that you'd align yourself with my political plan. You and me, we both think suffering is bad. We both think this war is bad. My war is bad. And you and me, we both want to put an end to it. So join me and together we can end this destructive conflict and bring order to the galaxy as father and son. This is actually where we see a lot of propagandists mess up. Because oftentimes, in actuality, they do have very, very different core values from the people they're targeting. But then they lose sight of what non-believers can and cannot connect with. Now, what happens is they'll string you along with effective propaganda at first, and they'll be well on their way to recruiting a budding new extremist, and then they'll just blow it all by saying something like, and hey, look, isn't this military parade, like, sick? Oh my god, glory to the dictator, isn't he so glorious looking? When the people they're talking to, the skeptics and the new converts, they do not have that core value of glorifying strength and power, and that just scares them away. If this movie had been made for an insider audience, a believer audience, it would totally just glorify the emperor as this godlike figure. But since it's talking to someone who supports the common man, aka the nameless, selfless, self-sacrificial nobody who gives his life to the cause of justice, how does it portray the emperor as another essentially nameless, self-sacrificial, humble guy who gives his life to the cause? To have been understood by a man like Broken Sword allows me to face death without fear or regret. Let the good of our country guide your decision. The protagonist of this movie is nameless, but had this movie just been a website, then they could have just used Squarespace's domain search tool and come up with a great name for this guy in 2 seconds. Squarespace, ad time. Hey, welcome to my office. Okay, so a lot of my audience is creative people and writers, storytellers, and I wanted to share with you guys not about our world. Oh, you thought it was? Oh, no, you misunderstand. It's not about modern China. It's not about any modern country. No, it's about a time period and a political situation that you have no strong preconceived judgments about, meaning it's safe to form new opinions in this context. It's safe to agree with the prescription for this time and place and feel sympathetic towards not an ideology. No, it's just an opinion about this one ancient, totally separate situation. And then that sits with you and it solidifies until one day you wake up and realize, oh my god, that Star Trek episode was about racism, that kids movie was about CIA crack cocaine theories. And no, I don't think there's anything wrong with Star Trek or Zootopia. This is something that a lot of media does, but that a lot of propaganda media has to do, because it cannot succeed if you know what it's about. Tactic number 7. The story understood the amount of potential transformation that it could realistically aim for, and it did not aim higher than that. It wasn't telling this new convert to authoritarianism to go out and be a goose-stepping soldier for the dictator and wage wars and kill off innocents along with their culture
cultures and their languages. No, we're saying stand aside and let the killing and violence happen without interfering. And it's also not just like a, well, this is all we can ask of you, Mr. Non-Believer. No, once again, it's portrayed as heroic. This movie is about a character accomplishing nothing, planning to do something and then not doing it. But it's framed as this glorious effort of standing aside, of leaving personal grievances at the door and making the pivotal decision to sit on your hands. That is held up as this pinnacle of philosophy and empowerment and virtue in this movie's ethics. Tactic number 8, the movie takes what the audience feels is simple and makes it overly complex, and takes the complex and makes it overly simple. Your average normie non-believer would look at a megalomaniacal warmonger and think, oh, of course that's evil. Black and white, that's pretty clear. But the movie makes this effort to show that, no, it's not that simple. This is a complex situation. Don't you see? You're not wrong. You just don't fully understand. You need to understand more. Then you see it's not so clear what you're concluding. And then the decision of how to interact with all this, if you are a anti-authoritarian normie, that's actually pretty complex. What is the best way to make a difference if you're living in a country with a government or a political leader that you think is morally bad? That is a really complicated thing to sort out. But the movie presents this dilemma as completely black and white. Are you pro-killing or are you pro-peace? Those are the options left to the character. That's the way it's framing this whole thing. When your average normie would probably be against fascism, but also against political assassination, and they would want to find any number of other political actions they could take. But no, this movie presents the decision of which ideology you align yourself with this extremely unbalanced black and white practical decision. Are you going to stab this man in the back and kill him, or are you going to be a non-violent hero, saint, Jesus, martyr person? Again, super manipulative. Okay, last two ideas aren't about the content of the story, but about the media experience more broadly. Tactic number 9 is the halo effect. Make the media good and lovable in its own right for other innocuous major elements that have zero proximity to the propaganda message at all. If you ask anyone about this movie, people who've actually seen it, the first thing they will say, and I guarantee this, is that they'll go, oh my gosh, that movie was so beautiful. And it is. They are right. It is possibly the most visually beautiful movie I have ever seen, still. And those aesthetics have nothing to do with its messaging. Second thing they'll talk about is the incredible fight scenes. Again, also true, and also nothing to do with its messaging. Can be enjoyed completely independently. Third thing probably is the soundtrack, which again, undeniably beautiful, and also undeniably separate from the movie's ideology. And the reason this is important is because the whole core fundamental principle of this type of propaganda is that if the skeptic audience person would actually stop and think about it consciously, they would snap out of it and not agree with anything that they're seeing. The way this whole thing works is through indirect means, through manipulation. They want to keep you in the dark about what it's actually about. So with the halo effect, which is distraction, but it's more than that, if the audience loves the visual beauty and all the martial arts choreography and all the music, and look, it has this actor that I like, and it's the genre I like, and I love it for all of those reasons, then, okay, sure, I love the plot too, it was so emotional, and yeah, he's a hero for not killing the guy. I love this so much that I love everything about it. That is the goal here. And almost more importantly, this has a gigantic added practical benefit too for the propagandists. If you make a preachy, ideologically driven movie, then the only way it's going to spread is through other zealots of the cause trying to annoyingly push it on their normie friends who don't want to see it. But if it's a gorgeous movie, if it has great fight scenes, if the soundtrack is played by Scott Perlman, if it has this actress I totally have a crush on, then the movie will spread easily because of all those things, and the propaganda effect will spread quietly along with it. In the practical sense, that is probably just the biggest reason why this movie got so popular and flew under the radar like it did, with most people not even realizing there's this extremist political message until you point it out, and then they'll be like, huh, yeah, they did kind of say it pretty explicitly. I was just so focused on the, oh my god, pretty stuff, but wow. The place where propaganda wants to be is that the media experience isn't about the propaganda, but the propaganda is an indispensable piece of that media. This movie could have been written differently, with the same type of climax, just less fashy, but it's so heavily intertwined with the fabric of the movie that the audience also can't separate it. And that effort will stop people from focusing on the sinister idea that they found themselves warming up to. Lastly, the other major way this movie snuck under the radar was tactic number 10. It was part of a trend that was made up of non-propaganda media. This was the early 2000s. For those who don't know, the 90s and the early 2000s were the golden age of martial arts movies in the West, or maybe it was the silver age. Bruce Lee was probably the golden age, but Hero slipped into this media environment that was full of Jackie Chan movies and high-budget wuxia movies like Crouching Tiger, Hidden Dragon and House of Flying Daggers, and other Jet Li movies, and martial arts parody movies like Shaolin Soccer and Kung Fu Hustle, and then there was also Western martial arts movies like Last Samurai and Kill Bill. And keep in mind, this is also the Toonami era, the first Western exposure to anime, Dragon Ball Z, later One Piece, and Naruto. Avatar: The Last Airbender would come out towards the end of this era, and all this media was comparatively ideologically innocuous. It was not fascist propaganda. And all of the masses, all of us, I was
was one of, I'm sure, many Asian American kids in the early 2000s whose favorite thing ever was to go to Blockbuster or Hollywood Video and just pick a random martial arts movie off the shelf and go home and watch it. And there was no reason to think twice about picking this particular movie up, or see in theaters. I think I saw it in theaters. But there was no reason for my parents to suspect that they were showing their kid a hero who stood aside and let a fascist dictator commit mass murder and destroy entire cultures for the sake of the great unified Uber nation. If the media stands out too much for other reasons, then people are going to scrutinize it more. This type of propaganda wants all the camouflage it can get. Okay, so these are the major tactics I see Hero employing. The question now is, how do you recognize them in the moment? And the answer is compartmentalization. If you're someone who goes into movies and books and shows thinking, okay, I'm either going to like all of this or I'm going to hate all of this, then prepare to be propagandized. If you are someone who cannot admit that a story is a good story if it has a political message you disagree with, or you can't admit a story is bad if it has a political opinion you agree with, then prepare to be manipulated. If you cannot look at this scene and say, I think this is beautiful, while still disliking the end message of the movie, get ready to pass some time playing solitaire because you are susceptible to brainwashing. Look at the parts of what you take in independently and evaluate them independently. That is the only way you're going to have a clear head to notice the type of tactics we talked about. That, I would say, is the most major answer. Aside from that, also, here's how the post-propaganda discussion often goes. Hey, so I think this thing was kind of propaganda-y. You do? How can you possibly think that?